Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Very good afternoon, distinguished guests, STEM speakers, researchers, and participants joining us from across the globe. First of all, I want you all to introduce our institute. So, Chaitanya Science and Arts College is a primal multidisciplinary institute established in 2001 at Pamgarh district, Janjgir Chapa, Chhattisgarh. Affiliated to Sahid Nandakumar Patel Vishwavidyalaya, the college is an autonomous institute approved by the UGC and accredited with grade A by NAAC, three-star institute of IIC. The institute offers a wide range of undergraduate, postgraduate, diploma, and skill-based programs in arts, science, commerce, management, education, dedicated to empowering rural youth through quality education. The college promotes academic excellence, research, innovation, entrepreneurship, and community engagement. The National Education Policy NEP 2020-2020 with modern infrastructure, ICT enabled teaching learning practices, a green campus, Okay. well-equipped lab and digital हाँ चलेगा library, इसमें and चलो active मैम नहीं तक extensive activities through NSS, NCC, and other innovative, and institute provides a holistic learning environment committed to inclusive and sustainable development. Chaitanya Science and Arts College continue to nurture social responsible, skilled, global, competent graduates. So now I request Ganesh sir to please present the documentary of our institute. क्या कर साउंड आ रहा है अच्छे से आ रहा है चैतन्य कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पामगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। चैतन्य विज्ञान एवं कला महाविद्यालय यूजीसी एवं राज्य शासन के मानक के अनुरूप विश्वविद्यालय से स्थायी मान्यता प्राप्त शिक्षण वो संस्थान आपके है। मोबाइल में ग्रामीण प्रॉपर्टी पे है पृष्ठभूमि ना एवं सुदूर भौगोलिकी के बावजूद क्या जहां देश और दुनिया की जरूरतों के मुताबिक शिक्षित एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन रचने का अनवरत क्रम पूर्ण ऊर्जा एवं उत्साह से जारी है। यहाँ महाविद्यालय अपने एक शैक्षणिक दिन की शुरुआत करने जा रहा है। इधर है महाविद्यालय की तकनीकी रूप से उन्नत कक्षाएं। जिनमें आधुनिक अध्यापन एवं अध्ययन के समस्त संसाधन उपलब्ध हैं और परिणाम है विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में चैतन्य के नहीं 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 क्या तो बंद हो जाएगी इन होनहार विद्यार्थियों के नाम। समय हो चला है प्रायोगिक कक्षाओं का। 5 मिनट महाविद्यालय की उन्नत प्रयोगशालाएं जहां प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों को लैब टू लैंड मिशन के अनुसार शिक्षा को अपनी माटी से जुड़ना सिखाया जाता है। ज्ञान की सहभागिता एवं प्रसार से ही ज्ञान की सार्थकता है। स्कूल हो, छोटे दुकानदार हो, किसान हो या ग्रामीण समाज, चैतन्य के विद्यार्थी समाज के हर तबके से अपना ज्ञान साझा करने का शानदार प्रयास कर रहे हैं। चैतन्य विज्ञान एवं कला महाविद्यालय अपनी स्थापना के साथ ही लगातार प्रयासरत है अपने विद्यार्थियों को शिक्षित, सुयोग्य एवं समग्र व्यक्तित्व देने के लिए। छात्रों की ऊर्जा की रोशनी खेल के मैदानों से लेकर
घर घर जागरूकता प्रसार और छत्तीसगढ़ी माटी की खुशबू बिखेरने से लेकर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान में भागीदारी देने तक शामिल है। महाविद्यालय का अभिमान है हमारी छात्राएं। शिक्षा से लेकर सांस्कृतिक विकास और खेलकूद से लेकर कौशल विकास के रंग तक जागरूकता मूलक कार्यक्रमों में बालिका सशक्तिकरण का साक्षात प्रमाण हमारी बेटियों की सफलता के साथ नित्य नए नए मुकाम हासिल कर रहा है और हमें गर्व करने का अनगिनत अनमोल अवसर दे रहा है। प्रयास चाहे हो हरियाली बचाने का या हरियाली बढ़ाने का, हर्बल तौर तरीकों के रखरखाव से भारतीय पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण का या ऊर्जा की बचत का, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने से लेकर जैविक खेती के उपाय तक और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने की कितनी ही बातें आज चैतन्य विज्ञान एवं कला महाविद्यालय के परिसर में चरितार्थ हो रही हैं। परिसर का पर्यावरणीय उद्देश्य हमेशा अपने छात्र छात्राओं को नवाचारी प्रयासों के साथ संकल्पित करता रहता है। ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानी जनों का उद्बोधन हो या पद्मश्री सम्मानितों का अभिवादन, संगीत की सुरीली धुन हो या खेल के मैदानों की ये उत्साह भरी आवाज, चैतन्य का परिसर सदैव गुलजार रहता है। और यहाँ महाविद्यालय के इस हिस्से में एनएसएस के स्वयंसेवक सक्रिय हैं। चैतन्य महाविद्यालय अपने छात्रों को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास पूरी ऊर्जा एवं उत्साह से जारी रखने के अपने संकल्प के साथ उन्हें सामाजिक सरोकारों से भी बखूबी जोड़ता है एनएसएस के माध्यम से। और हमें गर्व है अपने सुयोग्य शिक्षकों पर जिनके शोध, शिक्षण एवं प्रकाशन के नवाचारी प्रयासों से महाविद्यालय के अकादमिक उद्देश्यों को सक्षम एवं सशक्त बनने का स्वरूप मिलता है। चैतन्य को अभिमान है हमारे उन अनगिनत पूर्व छात्रों पर जिन्होंने समाज के सशक्त प्रहरी बनकर आज महाविद्यालय के संस्कारों को देश एवं समाज की सेवा हेतु प्रतिबद्ध किया है। चैतन्य का यह प्रयास अपने कर्मठ एवं ईमानदार अपरिमित इच्छा शक्ति के उत्साही हाथों के संग आप सभी का आशीष लिए हमेशा जारी रहेगा, निरंतर। Thank you so much, sir. Now, to mark the auspicious beginning of our intellectual journey today, on this 8th of August 2026, let us begin by invoking the blessing of Almighty. In keeping with our Indian tradition, we shall now we shall now chanting the Saraswati Vandana, seeking the blessing of Goddess of Knowledge. I would now like to invite Nishu Banjare to recite Saraswati Vandana. Please, Nishu. बोली सरस्वती माता की। या कुंदे तुषार हार हवारा, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृति देवैः सदा वन्दिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती
निरशेष जाडा कहाँ। बोलिए सरस्वती माता की। Thank you so much, Nikhil. A very warm welcome to to the to the two-day international conference of on multidisciplinary research in tribal development, the challenges, opportunity, and sustainable development. This prestigious event is proudly organized by Chaitanya Science and Arts Autonomous College, Pangat, Chhattisgarh, India, in collaboration with Madhya Pradesh Chhattisgarh Economic Association, Janjatiya Sodhpit, and the Social Science and Management Welfare Association. And we are truly glad to have with us today our chief guest, Professor Vinay Chauhan sir, our special guest, Professor Garima Tiwari, Dr. Tarun Bhardiwan, Dr. Rupendra Kavi, Dr. Prince Dan Mabechi, Dr. Jitendra Kumar Singh, Engineer Orgun Toyan, Dr. Abhishek Ranjan Kumar, our keynote speaker, Dr. Gauri Shankar Mahapatra, our resource person, Professor Vishwambhar Prasad Sati, Dr. Nicoleta, Dr. Wajira Gunasena, Dr. P.L. Chandrakar, Masweneng, Mokolwane Eric, Fadhillah Shelsa, Professor Kaberi, Dr. Divyaki. Our co-chairpersons, Dr. Niti Kumar Mishra, Dr. Chandramouli, Dr. Jagdish Samanta, Dr. Harpreet Singh, Dr. Ratan Mazumdar, Dr. Shela, Dr. Shaila Sridhar, Dr. Deepak, our patron, Mr. Virendra Tiwari, co-patron, Dr. V.K. Gupta, Dr. Amit Chandra, our organizer secretary, Dr. Narendranath Goria. So, without any further ado, I to officially welcome our global gathering, I now have the honor to invite our co-patron, Dr. V.K. Gupta sir, Principal of Chaitanya Science and Arts Autonomous College, Pangat, Chhattisgarh, India, to deliver the welcome address. Please, sir. Sir, please unmute yourself. Principal sir. Hello. Hello. So, Principal sir, you are not audible. Oh, hello, 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 hello. Got you, sir. Yes, Principal sir. sir. Hello, hello. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible. You are audible, sir. Okay, okay, thank you. So, namaste. It's an Indian salutation to extend warm and cordial welcome to each one of you. It gives me, after seeking blessings from Goddess Saraswati, she is a goddess of knowledge. It gives me immense pride and pleasure to welcome you to this two-day international conference on multidisciplinary research in tribal development, challenges, opportunities, and sustainable development, organized by Chetan Science and Arts College, Autonomous Pamgar, Jangir Champa, Chhattisgarh, India, in collaboration with prestigious institutions, Madhya Pradesh Chhattisgarh Economic Association, Janjatiya Shodh Peeth, and Social Science Management Welfare Association. We are greatly honored to have learned Professor Vinay Chauhanji, Honorable Vice Chancellor, Shahid Nand Kumar Patel Vishwavidyalaya Raigad,
Chhattisgarh as our chief guest. We have Shri Viren Tiwari ji, Honorable Chairman of Governing Board, distinguished eminent academicians, researchers, delegates from India and abroad, respected faculty members, dear scholars, students, ladies and gentlemen. I sincerely congratulate the organizing committee and all our collaborating institutions for choosing a theme that is academically significant and deeply relevant to the future of society. In most ancient Indian scripture is the Rig Veda, and there is a saying, let noble thoughts come from all directions. Knowledge has no boundaries. At the outset, I further extend my respectful greetings to esteemed Chief Guest Professor Vinay Chauhanji, whose visionary leadership and support to excellence, academic excellence have strengthened our region. I also convey my sincere respects to Shri Viren Tiwari ji, Honorable Chairman, Governing Board, for his inspiration and continuous support. I would like to sum it that 21st century is the age of information. We are passing through information superhighway and have reached in the world of animals, plants, wisdom. As a result, we are presently facing we have fear, we have war, poverty, inequalities, environmental and climate issues in our society. The global problems have global solutions. So many of our answers we seek today in science, sustainability, health, and human well being can be discovered by understanding the remarkable intelligence and interconnected of natural systems. For generations, tribal communities have lived in those relationships with nature. Their traditional knowledge reflects the principle of harmony, conservation, and sustainable use of natural resources. Therefore, our tribal knowledge should not be regarded merely as a heritage of the past. It can be a valuable knowledge for future resource. At the same time, we must recognize the enormous opportunities before us in education, skill development, entrepreneurship, sustainable agriculture, forest-based livelihood, ecotourism, handicraft, digital technology, community-based enterprises, and let us aim to create a self-reliant, resilient tribal communities. Our educational institutions must have a bridge between the knowledge and society, science and tradition, technology and humanity. I hope that this conference will provide such an interactive platform for meaningful dialogue among academia, policymakers, researchers, civil society, and tribal communities. The future of sustainable development may not lie in the conquering the nature, but in rediscovering how to live in harmony with it. May those days of deliberation lead not to knowledge and understanding, but to wisdom, collaboration, and meaningful action for a more inclusive, sustainable, and human future. I must add further that we have a very ancient heritage
from Indian knowledge system. Since more than 4,000 years, the knowledge is continuously transforming us. And we see that the essence of our Indian knowledge system is the sustainable approach. We are really fortunate to have learned professors like our chief guest, Professor Vinay Chauhanji. He is a very excellent academician, specialized in marketing, management, tourism, and he is a internationally reputed scholar on sustainability issues. He was associated with various prestigious institutions of the country and abroad. So I think he will be a great inspiration for us. And this Indian knowledge system is integrative and collaborative. That is the special feature of it. And at the heart of it is the sustainability issues. And it proposes that our future is very ancient. It's calling us back home for which can bring harmony with nature. So I hope that this conference will be a great success in establishing an international dialogue, because global issues have global solutions. So wishing you all the best for Wait, the conference. Thank you. Best that's wishes. the Thank you so much, sir, for your valuable thoughts and warm welcoming words. Now, to enlighten us about the core objective and the vision behind the two-day international meeting, I now request the Secretary of the conference, Dr. Narendranath Guria from Chaitanya Science and Arts Autonomous College, to introduce the theme of the conference. Over to you, sir. Thank you, Ranga. Today's two-day international conference on multidisciplinary research, tribal development challenge, opportunities, and sustainable development. It is great pleasure. Today, our chief guest, Honorable Vice Chancellor Professor Vinay Kumar Chauhan, SNPB Raigad, Chhattisgarh, India, registered also Dr. Tarundar Diwan sir, registered Dr. Jitendra Tiwari sir, registered Jharkhand State Open University, Ranchi, Jharkhand. Namaskar sir. Honorable Chairman Sri Virendra Tiwari sir, governing body, Chaitanya Science and Arts College, Pamgarh, Chhattisgarh. Distinguished guest from India, Professor Vishwambhar Sati from Mizoram Central University. Special guest Professor Garima Tiwari from Guru Ghasida Central University, Bilaspur, Chhattisgarh. Dr. Divya K. Andhra Pradesh, Vice President, International Social Science and Management Welfare Association, and all member of International Social Science and Management Welfare Association. Dr. Wajira from Sri Lanka, Masweneng, Mokolwane, South Africa, and Fadhillah Shelsa from Indonesia, Dr. Nicoleta for Romania, and Mr. Bridges. And also there are all technical session, chairperson, co-chairperson, session moderator, estimate, academic, researchers, delegates, faculty members, dear students, and ladies and gentlemen, all my dear students. A very good morning to all of you. It is my immense pleasure and profound honor is the organizing secretary to extend a warm, heartfelt welcome to his one of you this prestigious international conference 8 August and 9 August. And we gather not to merely exchange academic idea, but to refine our collective responsibility towards one of humanity's oldest and most resilient communities also. At the outset, I express my deepest gratitude to our respected chairman, sir, for giving me opportunity. Mr. Virendra Tiwari, governing body chairman, Chaitanya Science and Arts College, Pamgarh, Chhattisgarh, India, and basically initiatives such as the tribal sub-plan, Ekalabha Model Residential School in our Chhattisgarh, also Forest Rights Act, minor forest produce, and PM Yojana, also there at the Pradhan Mantri Jan Yojana, and government are working to improve education, healthcare, livelihoods, and infrastructure and digital inclusion aid the challenge such as the poverty, malnutrition, unemployment, displacement, and the climate change and educational
inequality remain. So our responsibility as a scholar and policymakers, as a researcher and also citizen, is not only to discuss this issue, but also to create evidence-based sustainable development and inclusive solution the empower tribal communities and while representing their identity, culture, and traditional knowledge. So, according to international conference, there estimates more than 476 million indigenous and the tribal people live across over 90 countries and representing around 6% of the total population. So although they constitute there as a relatively small proportion of the global population, but they account for a disproportionately large share of the world poor and continue to face significant social and economic inequalities. India is home to more than 104 million scheduled tribe people and constituting 8.6% of the country's population. Madhya Pradesh has the largest tribal population by the number of approx 1.23 crore, following the Maharashtra, Odisha, Rajasthan, and also Gujarat. Among the major tribes area, and the Chhattisgarh state stand out because nearly one in every three residents, 30.6% belong to the scheduled tribe. So it is very important issue. They are in India most significant tribal region, and their traditional knowledge of the sustainable agriculture, forest conservation, medicinal plants, water management, and also ecological balance, offering valuable lesson for the modern world in the addressing climate change and environmental sustainability. So today is very challenges for before the tribal communities. This means the constitutional safeguard and the various development initiatives from government side in our India and also in broader world. This is the challenging issue. They are poverty and unemployment and the big issue limited area to quality education, inadequate healthcare facility, and also there are challenges the malnutrition among the women and children and loss of traditional land and displacement due to industrialization, mining, environmental degradation, and also climate change affecting forest-based livelihoods. So lack of digital connectivity and gender inequality and preservation of the indigenous language and also their culture heritage. And this challenge require the coordinate offer from the government and academic institution, civil society and industry and local communities. Our college also working these are the different issue in our institution and also there big opportunity for sustainable development, the tribal development. Basic purpose of this conference, basically this international conference aim to provide a global platform for academicians, researchers, policymakers, and development that are the all dignitaries of the student and also the exchange idea, share the research findings and discuss evidence-based strategy, tribal development. Today, there are the international conference and 2 day and 4 session technical session will be discussed about the all holistic innovative solution and they are promote inclusive sustainability and also there are the heritage and institution in Chhattisgarh and according to their world, 476 million indigenous and tribal people in more than 90 countries. So it is very big challenge and also our researcher, young researcher all over the world and this is very program. This program aims to improve education, livelihood, healthcare, infrastructure and social justice and inclusive sustainable tribal development. So it is very, I extend my heartfelt welcome to all researchers and scholars who have joined us from the different institutions, regions, all their distinguished principals, sir, all their academics, professors, and research scholars, and your dedication to research, innovation, and knowledge creation. I encourage you to actively Jayewardenepura. participate in this technical session, exchange idea, build interdisciplinary collaboration, and also research that can contribute improving the lives of tribal communities. I hope this conference provide an excellent platform for the learning, networking, and gathering innovative solution for inclusive and sustainable tribal development. I wish you fruitful discussion and successful conference. Thank you to all. Thank you so much, sir, for setting a profound context for today's discussion. Now, moving forward, it is a privilege to introduce our special guest for the session. May I invite Professor Garima Tiwari
from the Department of Forestry, Wildlife and Environmental Science, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh, India, to kindly address the gathering. Welcome, ma'am. Thank you so much, Bhavna. Am I audible? Hello. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. You're Yes, audible. ma'am. Respected Chief Guest, Honorable Vice Chancellor of Shahid Nandan Kumar Patel Vishwavidyalaya, respected Professor Vinay Chauhan sir, and विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर तरुण जी, महाविद्यालय के चेयरमैन गवर्निंग बॉडी श्री वीरेंद्र तिवारी जी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वी के गुप्ता सर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री रूपेंद्र कवि जी और इंटरनेशनल फोरम से स्टैंड मोकलवाने साउथ अफ्रीका से प्रोफेसर आर एन चंद्राकर जी एंड प्रोफेसर कावेरी जी, विद्वज्जन जो हमारे साथ आज इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं महाविद्यालय के बिहाफ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सब्जेक्ट रखा गया है, इस पे मैं एक छोटा सा डेटा आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ कि वैसे तो भारत में लगभग 8%, अबाउट 8% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द ट्राइबल कम्युनिटी, लेकिन हम जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट 30%, और जिस क्षेत्र में हमारा विश्वविद्यालय है वहाँ पर ऑलमोस्ट 35% ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो अलग अलग तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ के जंगलों में रहती हैं। ट्राइबल ग्रुप जो है, जैसा इस कॉन्फ्रेंस को अभी हमारे पूरे देश में इंडियन नॉलेज सिस्टम की बातें चल रही हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए सबसे बड़े जो प्रतिनिधिकर्ता हैं, जो हमारे सभी ज्ञान को, हमारी जो परंपरागत जो परंपराएं हैं, ज्ञान है, इनका जो संरक्षण किए हुए हैं आज के संदर्भ में, वे हैं ट्राइब्स। और चाहे बात हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सोशल सिनेरियो की, या फिर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की, हमें उनके कल्चर से, ट्रेडिशन से आज सीखने की जरूरत है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ देयर नॉलेज। और यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम क्यों ना इस फोरम पे जो फाइंडिंग्स आती हैं, इन फाइंडिंग्स को साथ लेकर के हमारे आसपास जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके नॉलेज के डॉक्यूमेंटेशन की एक शुरुआत करें। क्योंकि मुझे लगता है कि आज चारों तरफ दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस के बीच ये ट्राइबल नॉलेज की एक रोशनी जो है, ये ना केवल इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रिजर्व कर सकती है, बल्कि हमें एक जीने की नई राह भी दिखा सकती है। क्योंकि विकास करना बहुत जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ जो हमारे पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे हैं, उस पे विचार करने की दृष्टि से ये हमें कहना होगा कि हमें वापस उन अपने वनवासी साथियों की तरफ मुड़ना होगा, उनसे जुड़ना होगा और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ना सर होगा। सुनिए ना, कि डेवलपमेंट जो गरिमा है, मैम ना रूम डेवलपमेंट नंबर शुड 2 में नॉट बैठी मीन्स हैं रिप्लेसिंग वहाँ द पे। ट्रेडिशन। तो वो डेवलपमेंट क्या मीन्स नाम है, वो एम्पावरिंग द नैन्सी ट्रेडिशन आई है, उसको विथ मिलवा दीजिए मुझे। नॉलेज। वो और अभी हम लोग डेमो दिया था इस मैम, मायने में आज का और ये आप इंटरनेशनल मिलना चाहेंगे कॉन्फ्रेंस तो जो मैं है, ये भेज बहुत देता हूँ, ऐसे भी बोल इम्पोर्टेंट है दीजिए कि और टाइम हम तक फ्री होंगे तो। इतने लंबे अभी समय तो के मैम का बाद इंटरव्यू चल इतने रहा है, सारे तो वो चल रहा है, विद्वज्जनों को सुनने लेक्चर जा चल रहा रहे है, हैं। और सेमिनार में। उनके जो नॉलेज हाँ है, शीतल को, ये निश्चित तौर पर नहीं नहीं कोई, इस या शीतल शीतल चाहिए, कॉन्फ्रेंस, इस चलो शीतल मैम के इंटरनेशनल पास फोरम जाइए पर एक कि मैम नई क्या रोशनी नाम, दिखाएंगे, नैन्सी न आई केवल है, ट्राइबल उनका हमने नॉलेज डेमो को दे दिया था, एक्सप्लोर आप मिलना चाहेंगे क्या? तो कह रहे करने हाँ की भेजो ना, मिलवा देंगे। डायरेक्शन में, हाँ बल्कि हाँ। साथ ही साथ आगे क्या बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से हम इस पूरी परंपरागत ज्ञान की श्रृंखला को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी भी दिशा में आप सभी का बहुत स्वागत है। और क्योंकि हमारे पास आज स्पीकर्स बहुत से हैं और हम बहुत उत्सुक हैं उन्हें सुनने के लिए, तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for sharing your valuable perspective with us.
It is my it is now my absolute privilege to introduce our next eminent speaker for today. We are deeply honored to have with us a visionary academic leader as our chief guest today. I now invite Professor Vinay Chauhan, the Honorable Vice Chancellor of Shahid Nand Kumar Patel Vishwavidyalaya, Raigad, Chhattisgarh, India. कैमरा से He has held several academic and administrative positions during his career like Chief Foreign Boys Hostel JU, Deputy Coordinator, UGC Special Assistant Program, Departmental Research Support Level 2nd, TBS JU, Converin Publication Cell JU, Editor of the Journal, Researcher General of University of Jammu and UGC, nominee of SAP program and of the UGC nominee of SAP program of Assam University to share profound insight on resource dynamic and sustainable development. We eagerly await your address, sir. So please, sir. Am I audible? Yes, sir, you're audible, sir. बीच बीच में कुछ नेट क्लिक कर रहा है कुछ आई डोंट नो देयर इज मे बी सम टेक्निकल इश्यूज बट एनीवेज गुड मॉर्निंग एवरीवन सभी को नमस्कार मैं प्रोफेसर विनय चौहान पिछले 4 महीनों से मैं यहाँ विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्यरत हूँ और आपने मुझे इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार आपका आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बोर्ड डॉक्टर वी.के. गुप्ता प्रिंसिपल ऑफ द चैतन्य साइंस कॉलेज गरिमा तिवारी जिनको अभी अभी हमें सुनने का मौका मिला वाज वेरी वेरी क्रिस्प एंड वेरी क्लियर ऑन द थीम डॉक्टर जितेंद्र कुमार Dr. Gaurishnkar, I'm told that he's about to join, and all the delegates, keynote speaker, resource persons, management and staff of Chaitanya College. It's a very, very happening and very, very good note to know that the Chaitanya Science and Arts College, which is the autonomous college, Palmgad, is organizing international conference on the theme which is highly relevant to all of us. I congratulate the college for choosing the theme which is very relevant. And the theme says that multidisciplinary research on tribal development for sustainable development. I think each word is very clear. When we talk about multidisciplinary, we talks about the true sense of NEP. NEP talks about dissolving boundaries and evolving education. We used to talk about interdisciplinary. आज हम बात कर रहे हैं मल्टीडिसिप्लिनरी और शायद पैरेलली हम बात कर रहे हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी की So sometimes we have to सामने look नहीं है the research or सामने perspective नहीं from है across the disciplines also. So that is what is transdisciplinary also. So multidisciplinary because मैं NEP की बात कर रहा था ये true सही है sense में we must know to dissolve the boundaries so that the true हाँ research हम comes सॉरी out because we have unfortunately compartmentalized each discipline. A person from physics thinks that it is my discipline. A person from geology thinks it is my discipline. But we believe that the person from physics and chemistry and geology and also sometimes Sanskrit and also sometimes environment scientists like Garima, we need to sit and look at the problem from different perspectives. So henceforth, the selection of the theme, calling multidisciplinary research on tribal development makes sense as on the present context. Number two, as Professor Garima very well said, that tribal development, 8%, national statistics, and something like 30 to 35 or 36%, the regional statistics. Talks about the problem which is international as also relevant in regional perspective. So congratulations again on picking up the topic which is very, very relevant as on the context of the regional as well as national as well as global perspective because these are indigenous communities and as Garima madam said that we have to evolve Indian knowledge system and everything would evolve out from indigenous system and culture.
Next, you have also added third word, which is very close to me, that is sustainable development. Again, one of my previous speaker and also the organizing secretary talked about the sustainable development. If I refer back to the theme and the word of sustainable development, I refer back to the Brundtland report, which talks about meeting the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. Which means आज हम अपने आप को नीड्स को फुलफिल करें, लेकिन हम निश्चित रूप से तय करें कि जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनकी कॉस्ट पे हम आज की डेवलपमेंट नहीं करें. जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम तीन मैट्रिक्स को टच करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल. तो कई बार सोशल और कल्चरल उसमें हम इंक्लूड करते हैं, सो समटाइम्स वी आल्सो कॉल इट एज सोशल कल्चरल. यूएन में, यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में 17 Recording okay. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आइडेंटिफाई किया. वी नॉर्मली कॉल इट एज एसडीजीज. तो आप एक तरफ से ट्राइबल की बात कर रहे हैं और एक आप तरफ इसको ग्लोबल लेकर जा रहे हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, तो आई एम हैप्पी. आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड दैट द थीम एंड द कॉन्टेक्स्ट दैट यू आर रेफरिंग इज एक्सेलेंट. हम एसडीजी 2 की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हंगर, ओके, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, अचीविंग फूड सिक्योरिटी, 100% फूड सिक्योरिटी, जीरो हंगर की बात कर रहे हैं हम. जब हम 15 की बात करते यहाँ हैं पे तो हम चेयर बात लेके करते आपको हैं बैठने के इंडिजिनियस लिए टेरिटरीज हैं. की. तो आई थिंक ये भी this conference addressed to the SDG 15, which talks about indigenous culture and indigenous territories. अगर हम 14 की बात कर रहे हैं, 4 की बात करते हैं, हम टॉक अबाउट क्वालिटी एजुकेशन. अगर हम 13 की बात कर रहे हैं तो हम क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहे हैं. तो व्हाट आई एम हैप्पी इज दैट यू आर एबल टू लिंक द डिफरेंट एसडीजीज while talking about tribal development and talking about the sustainable development. So happy to know about this. Now, key takeaways from this conference is, as my previous speaker also said, that let us try to link this to Indian knowledge system, Bharati Gyan Parampara. Also try to link it with the true essence of NEP, jahan we are talking about multidisciplinary research. Let us have deliberations on, and our outcome should be actionable research actually. What is theoretical research? We don't want. We want something, a research which is actionable and which is trying to help the societies and economies actually, especially in the state like Chhattisgarh and the place called as Raigad. Now, the outcome research is something which we look at. Publication is something which we look at. We are also expecting some kind of at least patents which should be registered on this indigenous culture and, tribal development. Economic reforms, I am certainly looking at. Let us try to have some deliberations and some outcomes and some actionable research which talks about socio-economic development of this region. Skilling has to be a focus. We at university is also talking about it. My some proposals are lying with central government and also with some corporate big houses. I am going to come out with a very good news very soon that we are going to establish a skilling centers here. Right from the student who is drop out from 10th standard to the one who is going for PG, let us have different skill courses which not only talks about employment but also talks about starting and establishing startups. Vision Viksit Bharat 2047 we are looking at, and I am sure that the youth which comes from the rural strata is something which is going to give the direction to the Vision Viksit Bharat 2047, whereby we are looking at the country as a fully developed nation when we are celebrating the 100 years of independence. So I think I am so happy to be part of this conference. So thankful to the management for giving me an opportunity to be here. And I am looking forward to many positive outcomes from this conference. And let me also share that we at university have invited the proposals from the colleges. We are looking each college to organize such conferences and seminars. And we are also willing to help them financially as well so that we are able to build a research ecosystem in our colleges. Thank you so much and heartiest congratulations to the college management. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your incredibly inspiring and thought-provoking words. Thank you so much, sir. Now, taking our discussion to the global arena, it is my absolute pleasure to welcome our esteemed guest and speaker, Dr. Wajira Gunasena from the University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka, who also serves as an advisory board member of SSMWA. We are delighted to have you speak to us today, ma'am. Please, ma'am.
जिनका नाम है वो जुड़े हैं। I request Dr. Wajira Gunasena, ma'am. Please, ma'am. मैम थोड़ी लेट जुड़ने वाले हैं, एक्चुअली नेटवर्किंग इशू का बताया है उन्होंने, तो Okay, sir. लेट जुड़ने वाले हैं। साउथ अफ्रीका सर भी Okay, sir. लेट जुड़ने वाले हैं, वाटर और Okay. नेटवर्क बताया है, तो हमें Next 1 बजे के बाद Yes. आप नेक्स्ट कर सकते हैं। Yes, sir. So, continuing our international dialogue, I now warmly invite our next guest of and speaker joining us from South Africa, Masweneng Mokolwane Eric, member of SSMWA, Limpopo Province. The floor is all yours, sir. Please, sir. Sir, am I audible, sir? yes. Yes. Okay. Mr. Masweneng Eric, sir, I now request you, sir. Okay. रत्नाकर में आगे बढ़े। Yes, sir. So I would now like to call upon our next special guest, Dr. Tarun Bhardevan, Registrar of Shahid Nand Kumar Patel Vishwavidyalaya, Raigad, Chhattisgarh, to share his address with the assembly. Welcome, sir. नहीं, Sir, am I audible, Dr. Tarun Bhardevan, sir? Hello. You can continue, please. next only. When he's back, he will join. Yes, sir. So now moving forward, behind every great institutional milestone is a pillar of constant support and leadership. I now invite our patron, Mr. Virendra Tiwari, sir, Chairman of the governing body at Chaitanya Science and Arts Autonomous College, to deliver his address. Please, sir. नहीं, Hello, Bhavna Yes, madam. sir. Yes, sir. Sir is having some connectivity issue. He's out. O- Keynote speech. So please, yes. Okay, so should we move forward? Yes, sir. Okay. We now move I into would our. Yes, sir. I would like to add that Honorable Chairman sir is the inspiration behind this activity. So on the behalf of his Honorable Chairman Governing Board, he's all the time very effortful to make to promote a culture of academics, innovation, and entrepreneurship. So he may join soon.
afterward. Please continue. Yes, sir. We now move into our vital keynote address. First, I have the distinct honor of inviting Dr. Gauri Sankar Mahapatra, Professor and Head Department of Tribal Studies, Art, Culture and Folk Literature, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, Madhya Pradesh, to deliver his keynote address. Welcome, sir. Thank you, madam. Thank you. Respected chief guest, distinguished dignitaries on the dais, eminent academicians, researchers, dear scholars and students. सभी को मेरा प्रणाम जोहर. It is indeed a matter of great privilege and honor for me to address this august gathering at the International Conference on Multidisciplinary Research in Tribal Development, Challenges, Opportunities, and Sustainable Development. I sincerely congratulate the organizer for selecting a theme of profound academic significance and national importance. This conference provides an excellent platform for meaningful dialogue on one of the most critical dimensions of India's inclusive development journey. India is home to one of the largest tribal population in the world. Tribal communities constitute about 8.6% of India's population and spread across different geographical regions. Especially central India, Madhya Pradesh and Chhattisgarh occupy a prominent or unique place in India's tribal landscape. These states are home to stay of the different largest tribal populations, including the Gond, Baiga, Bhil, Kol, Muria, Oran, and Ojmaria communities. They are rich cultural traditions, indigenous knowledge system, and close relationship with forest and natural resources make this region not only a geographical space, but a living repository of human civilization, ecological wisdom, and cultural diversity. For centuries, tribal communities have demonstrated how human can live in harmony with the nature. Their knowledge of biodiversity conservation, water harvesting, medicinal plant, traditional agriculture, seed preservation, and community governance has been transmitted across generations. Today, when the world is confronted with the climate change, environmental degradation, biodiversity loss, and growing social inequalities, this indigenous knowledge has become the more relevant than ever before. However, despite the constitutional safeguards and numerous development programs, tribal communities continue to face the multiple challenges: poverty, malnutrition, inadequate healthcare, educational disparities, unemployment, digital exclusion, displacement due to mining and infrastructure projects remain significant content. While development has reached many tribal areas, its benefits have often been uneven, highlighting the need for more inclusive and participatory approaches. These challenges remind us that tribal development cannot be viewed purely through an economic lens. It is equally a question of social justice, cultural preservation, environmental sustainability, constitutional rights, and human dignity. Therefore, no single discipline can adequately address this complex issue. They demand a multidisciplinary perspective that integrates knowledge from the social sciences, natural sciences, health sciences, technology, law, public policy, and management. Anthropologists and sociologists help us to understand the tribal culture, their customary institution, kingship, and indigenous knowledge. The historians, they preserve the memory of tribal resistance movements, migration, and cultural transformation. The economists, they study the livelihoods, employment, poverty, and market access. Environmental scientists, they examine the ecosystem conservation and climate resilience. Public health,
Experts address the nutrition, maternal and child health, malaria, and sickle cell diseases. The education aid, they focus on multilingual education and culturally responsive pedagogy. The engineers and the information technology, they specialists contribute through the digital inclusion, GIS mapping, telemedicine, renewable energy, and smart rural infrastructure. Together, all these disciplines enable to holistic and evidence-based solution. A few examples from the central India, the Baiga community of Madhya Pradesh possesses the remarkable knowledge of medicinal plant used for treating the common illness. Scientific documentation and validation of the knowledge undertaken with the communities informed the consent can enrich the healthcare research while protecting the indigenous intellectual property. Similarly, the Govt communities have long practiced sustainable forest management through the community norms and traditional ecological knowledge. Their experience provides the valuable lessons for biodiversity conservation, climate adaptation, and community-based natural resource management. In Chhattisgarh, the procurement and value addition of minor forest produce, including the mahua, tendu leaves, sal seeds, chiranji, and lag, has significantly improved the livelihoods of the tribal families. This demonstrates how research in economics, forestry, management, public policy, and digital marketing can work together to create the sustainable livelihood opportunities. The globally recognized Bastar Dokra metal art and craft and bone painting of Patangad, Madhya Pradesh are excellent examples of how the traditional art can be preserved while creating the employment through the design innovation, tourism, digital marketplace, and entrepreneurship. Education remains one of our greatest priorities. Although enrollment has increased significantly, many tribal children continue to face barriers arising from geographical isolation, language differences, inadequate infrastructure, and socio-economic disadvantages. Education should empower the tribal children without disconnecting them from their language, culture, and identity. Mother tongue based multilingual education, digital learning, teacher training, and community participation must become the integral components of the educational reform. Healthcare requires equal attention. Tribal districts शीतल continue to face the high level किनको of malnutrition, anemia, malaria, ये and sickle किनको बोलूँ cells मैं diseases. Mobile health units, हाँ telemedicines, and nutritional हाँ intervention and community health workers have shown encouraging results, but अच्छा much more remain to be done. Research should be integrate public health with हाँ anthropologists, nutrition science, environmental studies, and traditional medicine to develop the culturally appropriate healthcare models. Climate change, it presents another pressing challenges. Changing the rainfall patterns, forest degradation, decline the biodiversity and water scarcity directly affect the tribal livelihood. Yet, tribal communities possess the generation of experience in adapting to environmental change. Their ecological knowledge should be recognized as an important component of India's climate resilience strategy. One of the most sensitive concerns is displacement caused by the mining and industrialization, dams, and infrastructure development. Development is essential, but it must be equitable. Policies should ensure the free and informed participation, fair compensation, livelihood, restoration, and preservation of cultural identity. Rigorous research is needed to evaluate the long-term social, economic, and environmental impacts of such projects. The National Education Policy 2020 has opened the new possibilities by the promoting multidisciplinary education, research, innovation, Indian knowledge system, and community engagement. Universities should use this opportunity to establish collaborative research centers dedicated to tribal development. Likewise, the vision of Vikasit Bharat 2047
cannot be realized without the inclusive development of the tribal communities. India's aspiration to become a developed nation must include the equitable access to education, healthcare, livelihood, technology, and justice for every tribal citizen. The United Nations Sustainable Development Goals also provide a comprehensive framework: quality education, good health, gender equality, clean water, decent work, reduced inequalities, climate action, and biodiversity conservation all have direct relation to tribal development. I would also like to emphasize the role of women and youth. Tribal women contribute significantly to agriculture, forest management, handicrafts, food security, and household welfare. Supporting women through education, entrepreneurship, financial inclusion, and leadership development strengthens entire communities. Similarly, tribal youth represent a bridge between the tradition and innovation. By training them with quality education, research opportunity, digital जी सर. skill, and innovative support, कहाँ? we invest in future of both tribal सर communities तो मैं and the रिकॉर्डिंग nation. कर. As research, नहीं वहाँ as वहाँ researchers, we must sufficient है. rethink हाँ our सब. methodologies. Research should not simply be conducted on the tribal communities. It should be conducted with them. Participatory research, community engagement, informed consent, cultural sensitivity, and ethical practices should become the foundation of every research project. Tribal communities should be equal partner in identifying the research priorities, generating knowledge, interpreting the findings, and implementing solutions. Dear friends, the true measures of research is not only the number of publications we produce, but the positive change we bring to society. If our research helps improve the education in a remote tribal village, reduce the malnutrition, strengthen the sustainable livelihoods, preserve an endangered language, or informs better public policy, then our research and scholarship has fulfilled its highest purpose. Let us therefore commit ourselves to research that is scientifically, rigorous, ethically, participatory in approach, multidisciplinary in perspective, and transformative in impact. I conclude with a thought. The future of tribal development will not be shaped only by economic investment, but by the knowledge we create, the partnerships we build, and the respect we show for the wisdom, dignity, and aspiration of tribal communities. Let this conference become a catalyst इंडिया. for new ideas, strong collaboration, and meaningful actions. Together, let us build a future where tribal communities are not only the beneficiaries of development but equal partners in creating an अच्छा वहाँ से. inclusive, sustainable, and prosperous India. Thank you. Jai Hind. हाँ ठीक. Thank you so much, sir, for such an enriching and deeply academic keynote. So now continuing our international dialogue, I now warmly invite our next guest and speaker joining us from South Africa, respected M.M. Eric, sir, member of SSMWA, Limpopo province. Welcome, sir. Sir, you are not audible, sir. Please turn on your microphone, sir. Thank you so much. My name is Masweneng Mokolwane Eric from South Africa. I am pleased to join you in this session, and I'm quite excited to be part of this magnanimous and great session for
discuss it. I am not sure if my screen is visible from the other end, but I'm quite excited to be part of this great session, as I have already mentioned. Tribal development in rural South Africa, looking at challenges, opportunities, and sustainable development. Rural South Africa has significant challenges, but it is also having valuable assets, which are land, culture, indigenous knowledge, human capital, and natural resources. Now, understanding tribal development, the social, economic, environmental, and institutional development of communities living under or influenced by traditional leadership and customary systems. This involves improving livelihoods, creating employment opportunities, developing infrastructure, education and skills, agriculture and enterprise, culture and indigenous knowledge, effective governance, protecting natural resources. In this regard, we need to look at major challenges. And these challenges involves economic challenges such as poverty and unemployment, limited local businesses, dependence on social grants, limited access to finance and markets. In terms of infrastructural challenges, there are poor roads infrastructure, water and sanitation is still a challenge, limited electricity and transport, inadequate digital connectivity in rural areas. Now, in terms of educational challenges, education and skills are still those challenges that we are facing in South Africa. This includes, amongst others, limited learning resources, skills shortages, few vocational opportunities, youth migrations. Now, in terms of land and environment, complex land administration, land degradation, water scarcity, competition over resources. These challenges reinforce one another and can keep community trapped in poverty. Now, opportunities for rural development. In terms of agriculture, opportunities lies on crop production, livestock, poultry, agro-processing cooperatives. Now, in terms of entrepreneurship, small businesses are quite important, where young people should be or are involved in youth enterprises, local manufacturing, and digital trade. Looking at opportunities in tourism, cultural tourism involves, amongst others, heritage sites, arts and crafts, traditional food, and nature. In terms of opportunities in technology, digital education is still a key factor, which outlines business, agricultural data, and digital finances. Now, rural communities should be viewed as places of opportunity, not only place of need. Now, looking at the role of traditional leadership, traditional leaders can contribute to development by mobilizing communities, supporting development initiatives,
promoting environmental conservation, facilitating dialogue on land, facilitating community participation, protecting cultural heritage, supporting young or youth programs, working with municipalities and government. However, traditional leadership must work within a framework of transparency, accountability, constitutional rights, and community participation. Traditional leadership, democratic government, and active citizens brings about stronger rural development. Now, in terms of sustainable development requires balance between three dimensions, namely social, economic, and environmental. In terms of social, education, health, equality, community participation should all be enhanced. In terms of economic dimension, employment opportunities, agricultural development, entrepreneurship, and tourism should all be enhanced. In terms of environmental dimension, water conservation, land management, biodiversity, renewable energy should all be enhanced. So the balance between these three will enhance sustainable development. Develop today without destroying opportunities for the future. Indigenous knowledge can complement scientific knowledge in agriculture, environmental conservation, water management, and climate adaptation. Now, a sustainable rural development model depends on 7 pillars. These pillars involve land, people, economy, infrastructure, technology, environment, and governance. Now, in terms of land, our priority will be just receive better education, better health, and skills development amongst our people should be enhanced. So meaning that within our people, knowledge is power. Power. So looking
Our climate has to be protected. Our climate has to be resilient. So in this regard, it is within our responsibility to make sure that we preserve, we conserve our nature, we conserve our climate, we protect our climate in all respect. Now, in terms of governance, our people should participate and be held accountable in all respect of governance. And as such, we will be talking about a better sustainable development that embraces the development of our communities. This brings us to the end of my presentation, which was limited to 10 minutes. I thank you so much. God bless you. Thank you so much, sir, for sharing your vital global insights on tribal development. Now, moving forward, next I am pleased to invite Dr. Jitendra Kumar Singh, Registrar of Jharkhand State Open University, Ranchi, Jharkhand, and Advisory Board Member of SSMWA, to deliver the second keynote address. Welcome, sir. नमस्कार, जोहार। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार कार्यक्रम में देश और विदेश अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग ले रहे सभी विद्वत जनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज का जो विषय है, विषय बहुत ही ज्वलंत, और ये जो वेबिनार समाप्त होने के बाद 2 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उपलब्ध प्राप्त लोगों का जो विचार होगा, जो विमर्श होगा, उसमें यह मुद्दा उभर कर आएगा कि वैश्विक पटल पर, विश्व स्तर पर हमारे जो आदिवासी हैं, जो जनजाति हैं, उनका रख रखाव, उनका बौद्धिक विकास, उसका चातुर्दिक विकास, और उसमें जब हम ये कार्यक्रम करेंगे तो उसमें कई तरह के चैलेंजेस भी आएंगे, और चैलेंजेस जब आएंगे तो उसके ऊपर कई अवसर भी हमको मिलेगा। और इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर, और खास करके वैसे लोगों के लिए जो प्रकृति की रक्षा में, प्रकृति को बचाए रखने में जिनकी अहम भूमिका है, वह ट्राइब्स, वह कम्युनिटी, जिनको जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आज जो यह ऑर्गेनाइज किया गया है, सबसे पहले हम चैतन्य साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज को हृदय से हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, और इस महाविद्यालय से इस राज्य के तमाम शिक्षाविदों को मैं कोटि कोटि साधुवाद देना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे ज्वलंत मुद्दे को लाकर, और सिर्फ भारतवर्ष में जोड़ने का काम नहीं, बिल्कुल ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर लाकर, विश्व पटल पर लाकर कि हमारे इनकी क्या संभावना हो सकती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रक्षक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, और उदाहरण से पहले
मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा कि इसमें जितने जुड़े लोग हैं, सब लोगों का अपना विचार, उसमें से जिसमें साम्य होता है, जिसमें जिसकी हिस्सा बराबरी हो रहा है, उसको काट छांट कर जो नए विचार उभर कर आते हैं, उसको पुस्तकीय, वो सेमिनार का जो मुद्दा होगा वो जरूर छपना चाहिए, ताकि राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, पूरा भारतवर्ष, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो यह एक मुद्दा बन गया कि हमारा पर्यावरण दूषित हो गया, हमारा जंगल दूषित हो गया, हमारा पानी दूषित हो गया। तो दूषित होने के लिए बचाव का एकमात्र और सबसे बड़ा, अगर कोई उसके रक्षक हैं, उसको बचाने वाला है, वह है ट्राइब्स कम्युनिटी। तो ट्राइब्स कम्युनिटी को उनके उत्थान के लिए हम उनके ऊपर क्या करें, उनके शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए आप लोगों ने जो इतना बड़ा वैश्विक पटल दिया है, इतने बड़े बड़े विद्वत जनों को एक साथ जोड़ने का काम किया है, इसके जो ऑर्गेनाइजर, इसके जो सेक्रेटरी, इसके जो वाइस चांसलर, मैं सबको जितना बोलूं वह मेरी बात कम पड़ जाएगी। निष्कर्ष में एक ही बात पर हमको जोर देकर कहना है कि वैसे समुदाय के लोगों को जिसकी संख्या काफी है, हम अगर संपूर्ण भारतवर्ष की बात करें तो 700 से भी अधिक जनजाति हमारे देशों में वास कर रहे हैं, और अगर राज्य में अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ 32 तरह की, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि जो हमारा सराउंडिंग एरिया है, बिहार है, इसमें अगर आदिवासियों की स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो आप पाएंगे कि उनकी स्थिति आज भी, जो हमारी एक सीमा होनी चाहिए, जो हमारा एक मापदंड होना चाहिए, उससे कहीं निचला पायदान पर है। तो इतने प्रबुद्ध जन एक साथ अगर मिलेंगे तो निश्चित रूप से उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा, उनका सामान्य जीवन, उनका रहन सहन, उनका खेलकूद, उनका सांस्कृतिक विरासत, महिलाओं की स्थिति, बच्चों की स्थिति, बुजुर्गों की स्थिति, और का अल्प समय में जो शादी विवाह हो जाता है, उस पर ठहर ठहर कर अगर चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि एक जबरदस्त गैप। हम सबको बराबरी का दर्जा दें, ये नहीं कि पढ़ लिख करके नहीं। हमारी टीम, विश्वविद्यालय की टीम, राज्य सरकार की टीम उनके गांव तक जाए, गांव में शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि का सभी संसाधनों को उपलब्ध कराए, उनको मोटिवेट करें, और जब आप उनके साथ आपसी संवाद करेंगे, आज पूरे देश में जो मुद्दा था छत्तीसगढ़, झारखंड, वो किसी से छुपा हुआ नहीं था, मध्य प्रदेश का हिस्सा वो किसी से छुपा हुआ नहीं था, आज शांति के कगार पर है। कोई नहीं चाहता है हिंसा, कोई नहीं चाहता है अपराध। तो अपराध मुक्त बनाने के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा है ट्राइब्स को, ट्राइबल को, उनके बच्चों को, उनके बुजुर्गों को, उनकी स्त्रियों को, उनके यहाँ के रहन सहन को पूरा सरकार अपने बैठकर, सरकार इनके द्वार, विश्वविद्यालय इनके द्वार, राज्य सरकार इनके द्वार पर जाए और उनका रहन सहन, खान पान, चाल चलन, रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि सभी चीजों से अवगत होने की जरूरत है। और यदि आप ऐसा कर सकेंगे, ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से हमारी जो बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थान है, विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, हम लोग देख सकते हैं कि एकदम रिमोट एरिया में कॉलेज खुले हुए, रिमोट एरिया में स्कूल खुले हुए, रिमोट एरिया में
चिकित्सा की व्यवस्था है, लेकिन आज भी वो वहां जाने से वंचित है। तो निश्चित रूप से हम सबको राह दिखाने की जरूरत है। और जो इनकी चैलेंजेस हैं, ये जंगलों में रहकर, जंगलों के बीच रहकर वो प्रकृति को बचाए रखते हैं। हम लोग एक छोटी सी बात कहेंगे कि कोरोना काल में जितनी कैजुअलिटी, जितनी दुर्घटनाएं ये एरिया में, हमारे आपके जैसे लोगों के एरिया में जिसने इसको प्रभावित किया, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से जो आदिवासी क्षेत्र का जो लोग था, जो आदिवासी जनजाति समुदाय के लोग थे, वहां पर ये प्रभाव अपना असर नहीं दिखा पाया। कारण वो शुद्धता पर विश्वास करता है, वो प्रकृति को करीब से देखता है, वो वृक्ष को नहीं काटते, वो वृक्ष को भगवान की तरह समझते हैं, वो पानी को गंदा पॉल्यूशन नहीं करते। हम पढ़े लिखे लोग, हम बड़े लोग जिनको इंडस्ट्री चलाना है, जिनको बड़ी बड़ी चिमनियां चलाना है, वो उसके जहर को सीधा सीधा हम पानी में जहर घोलना के लिए उनको सिखाते हैं। तो इन तमाम चीजों से उनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए आपसी भाईचारा, उनको चाहिए बराबरी का हक, उनको चाहिए समानता। तो समानता के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहां पर कोई जात धर्म मजहब किसी जात विशेष इत्यादि से नहीं, बिल्कुल शांत होकर हम सबको मिलकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा संदेश दें कि आपके लिए स्कूल खुला है, आपके लिए हॉस्पिटल खुला है, कुपोषण के जो शिकार हो रहे हैं आपको बढ़िया भोजन की व्यवस्था है, आप अच्छे से रहिए। जो कम समय में शादी विवाह कर लेते हैं वहां पर भी रोक लगाने की जरूरत है। और सबको सबसे प्रमुख मुद्दा है कि शिक्षा के साथ उनको जोड़ें, विश्वविद्यालय के साथ उनको जोड़ें। और राज्य के तमाम विश्वविद्यालय एक शिक्षक अगर चाह ले कि नहीं एक गांव को गोद लेंगे, वैसे गांव जहां पर पहला जनरेशन आज तक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया है, यदि हम उसको साक्षर कर सकेंगे, उसको यदि गोद लेकर के वहां पर अपनी भूमिका दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से जो मेरा ग्राफ है वो ग्राफ बहुत ऊंचा तक जाएगा और वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। वो भी आप हम लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ एक पहाड़िया जनजाति है जो पहाड़ों पर रहते हैं, वो जमीन पर आना ही नहीं चाहता है। वो हमारे और आपके साथ स्कूल कॉलेज में बैठकर अध्ययन अध्यापन नहीं करना चाहता है। तो वहां पर बैठकर वहां के लोगों को यह बताने की जरूरत है कि हम आपके अच्छाई के लिए, आपके बच्चे पढ़ेंगे। जो गरीबी है, अभी एक पूरे दुनिया की ज्वलंत मुद्दा हम लोग देख रहे हैं, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि एरिया में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो शहरी एरिया है, अब शहरी एरिया में जमीन कम है, तो बड़े बड़े उद्योग खोलने वाले लोग वो उनको जमीन चाहिए, जमीन चाहिए तो जंगल कटेगी, नदियां भरेंगी। तो ये सब चीजों का पहले से प्लान करना पड़ेगा। और जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनको पलायन से रोकना पड़ेगा। रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है हमारे यहाँ शिक्षा, हमारे यहाँ की चिकित्सा, हमारे यहाँ बहुत तरह की चीजें हैं जिनको जोड़कर हम इनके तमाम चीजों को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ के एक शिक्षाविद, हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े कवि लेखक प्रोफेसर रामदयाल मुंडा हुआ करते थे। उनका मानना था, उनके हर एक वाक्यों में यह लिखा था कि जे नाची से बाची, यानी जो नाचेगा, जो गाएगा वही बचेगा। यानी संस्कृति के सबसे बड़े उपासक, संस्कृति के सबसे बड़े पुजारी अगर कोई है तो वह हमारा है आदिवासी।
हमारा है जनजाति, वो समूह में रहना पसंद करते हैं, वो एक दूसरे का भला चाहते हैं, वो एक दूसरे का मदद करना चाहते हैं, वो दोना भी देते हैं और कोना भी देते हैं, यानी जगह भी देते हैं और खाने पीने के लिए। इनके यहाँ यदि आतिथ्य सत्कार की बात करें, मैं आपको क्या बताऊं, तो आप देखकर दंग रह जाएंगे। घर में जब आप जाएंगे तो इनका जो मान सम्मान करने का तरीका है, भले कुछ रहे या ना रहे, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। आज भी इनके नजदीक जाकर देखेंगे तो भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा 2020 की जो हम बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं वो भारत का, विकसित भारत का, तो हमारी आत्मा, हमारा सब कुछ अगर ढूंढना हो तो ढूंढने की जरूरत है, वह हमको इनके गांव में जाना पड़ेगा, इनके आसपास में जाना पड़ेगा। हम इनकी संस्कृति, इनकी भाषा भी, कई एक जनजातियों की भाषा विलुप्त होते चली जा रही है। इस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भाषा अगर बचेगी, संस्कृति अगर बचेगी, तभी हम बच पाएंगे, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। संगीत में बनकर ये जीना चाहते हैं, सामूहिकता पर विश्वास करते हैं, सबके साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। ये आपसी भेदभाव से कोसों दूर रहते हैं, सरल होते हैं। इनका सोच समझ भी बहुत सरल और सहज होता है। वो दूसरों के लिए, हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आज का जो यह संगोष्ठी है, आज का 2 दिवसीय जो अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी है, वह अपने आप में बहुत ही महान, बहुत ही विशाल है। इस तरह के आयोजकों को मैं पुनः, चूंकि मैं देख रहा हूं कि मेरा समय हो गया और वो मैडम वहां तक पहुंच गई हैं, इशारा काफी है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप विद्वत जनों का, शोधार्थियों का और बड़े से बड़े शिक्षाविद जितने लोग जुड़े हैं सबका, और इसके व्यवस्थापक का, प्राचार्य का, ऑनरेबल वाइस चांसलर का, और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा ब्रजेश जी का, जिन्होंने अपने इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में मुझे भी एक अदना आदमी को बोलने का अवसर दिया। मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, और इस तरह के सभी आयोजकों को, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, जितने मेरे शोधार्थी हैं, सबके लिए एक शुभकामना संदेश होगा कि यह जन जन की आवाज है, यह घर घर तक फैलाना है, हर दरवाजे पर यह दस्तक देना है, और जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो इसका एक सार बनाकर, एक बुकलेट बनाकर, और सब जगह सार्वजनिक तौर पर इनके जो अधिकार, इनके जो शिक्षा, इनके जो चिकित्सा इत्यादि पर जो काम हो रहे हैं, एजुकेशन के महत्व को इनके द्वार तक पहुंचाने से हमारा यह कार्यक्रम और भी बेहतरीन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने, इतने बड़े बड़े विद्वान लोगों ने मेरी बात को सुनी, धैर्य पूर्वक सुनी, मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके महत्वपूर्ण समय के लिए, आपकी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, Now नमस्ते। to share, जी सर, धन्यवाद सर। To share profound insight on resource dynamic and sustainable development, please join me in welcoming Professor Vishwambhar Prasad Sati. He joined us as a distinguished professor from the Department of Geography and Resource Management at Mizoram Central University, Aizawl, India. Sir has published more than 100 international research. Welcome, sir. Yeah, thank you very much, madam, for your invitation. Before I start to say something, please allow me to share my PowerPoint presentation. I am not allowed, as it shows in your screen. So
Yeah. So, Brijesh, the technical team, Brijesh, please. Please allow me to share my PPT. It is only 10 minutes PPT. Yeah, it is there. Okay, thank you very much. And first of all, I acknowledge my thanks to the organizers, the Chaitanya Mahavidyalaya, principal of the college, and the faculty members, and especially Dr. Narendra for giving me this opportunity to be a part of this international seminar on the tribal development. I belong to Uttarakhand, though I'm working in Mizoram. So Uttarakhand has 5 major tribes, and I will just case study of one tribe that is called Bhotia, and I have very small presentation of 10 minutes. I will finish within 10 minutes. So please you watch my presentation and enjoy. Can you see this presentation? Yes, sir. One more question that, wait, yeah, wait, where is this? How to go there? Yeah, yes. So this is scrolling down. The slides are going up or down like this. Can you see? Sir, I see. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then because these are the some basic questions, then I will start. So my talk will be on tribes of the Central Himalaya, their culture, habitat, and livelihood system. This is picture behind. You can see that this is the winter season, and this area is called the Dharma Valley, which remains almost 6 months snow-capped, and people of Bhotia tribes, they move down to the valley regions. So I am coming this. Will not take much time, only 10 minutes. If you cannot watch my this presentation, you please write something in the writing box. So if you look into this map, you will find all these tribes. They are located in the border areas of Uttarakhand. So even in the all corner, east, west, south, north, they have their own habitats. The major tribes are like Bhotia, Buksa, Jonsari, Raji, and Tharu. They have small populations. Highest population belongs to Tharu tribes, then Buksa, then Jonsari, then Bhotia, and Raji or Banraj. This tribe, the people of these tribes are very few. Their population was only around 500 in 2011, and after that there is no census data. So there may be some changes in the census, coming census in 2027. When we talk about the location of these tribes of the Central Himalaya, the Bhotia, they live in the northern part of Uttarakhand, border with Tibet and Nepal. Buksa people, they have habitat in the southern part of Uttarakhand, border with Uttar Pradesh and Nepal. Jonsaris are habiting in western part of Uttarakhand, border with Himachal Pradesh. Rajis are located in eastern part of Uttarakhand, border with Nepal. And Tharu are located in the southern part of Uttarakhand, border with Uttar Pradesh and Nepal. So this is their habitat, where they are located in terms of the Central Himalaya. When you see this slide, this is tribes, occupation, and their habitat types. So Bhotias are known as semi-nomads. They rear goats, sheep, and horses. And as I told you that during summer, they live in the high Himalaya, in the pasture lands, rearing their animals. And during winter, they come down to the valley regions because the high Himalaya receive very huge snowfall.
Their houses are made of mud, stone, and wood. Second tribe is Buksa. They practice agriculture, they rear livestock, and they collect non-timber forest products. Their houses are made of stone and mud. Jonsari people are very peculiar in the central Himalaya. I am not going to discuss much about them. They rear livestock and they also do laboring. They have small agricultural lands. Their houses are very typical, very traditional, and they are made of wood and stone. Rajis are forest dwellers. They gather the non-timber forest products for their livelihood. Generally, they live in the forest area. Their houses are made of mud and grasses. And Thalus tribes, they practice agriculture, they practice livestock, and they also practice making handicrafts, different types of handicrafts. So their livelihood is mainly based on this the primary sector economy. So I will case study of Bhotia tribes. And Bhotias are actually the Indo-Tibetan race or Indo-Mongol race or Tibeto-Myanmar race, Burmese race. They live in the northern part of Uttarakhand, border with China and also Nepal, and western part is Himachal Pradesh. They live in 7 river valleys of 3 districts of Uttarkasi, Chamoli, and Pithoragarh. And the river valleys are the Bhagirathi, the Yamuna, the Alaknanda, and then Dholi Ganga, East Dholi Ganga, Gauri Ganga, Kali Ganga, and Ram Ganga East. So these are the river valleys and their habitats, and they live in the northern part of India. So if you see the sub-tribes of Bhotia and their distribution, Bhotia itself has many tribes because India have many tribes, races, religions, cultures, customs, and similarly within the Bhotia tribes also they have different types and they live in different river valleys in different districts. Like Jat people, they live in Bhagirathi River in Uttarkasi, Marcha and Khampa, they live in Alaknanda River in Chamoli district. Tolcha live in Dholi Ganga, Chamoli district. Johari and Soka, they live in Ram Ganga East, Pithoragarh. Johari and Soka, again, they live also in the Gauri Ganga and in Pithoragarh district. Darmiya is also a very important sub-tribe of Bhotia. They live in Dholi Ganga East in Pithoragarh. And Byasi or Byas Valley, that is called Adi Kailash. Nowadays, there is, that the pilgrimages to Adi Kailash started recently. So that Byasi people, they live in Byas Valley of Kali Ganga in Pithoragarh district. So their habitats and their subtypes and also their distribution in the central Himalaya. So again, when we talk about Bhotia tribes and their cultural traits, Joharis, they are traders and also they work in the agricultural land. They practice agriculture. Dharmiya, they are mixed Tibetans and they practice Hindu culture customs. Byasi, they are animist and they are influenced by Buddhism. Marcha are traditional pastures. They rear their animals in the Bugyal area or the alpine pasture lands in the high Himalaya. Tolchas are transhumans. They are separate. They have 2 dwellings in highland and lowland, and they have also migrations, highland migrations, lowland migrations. And Jat people are actually, they are Tibetan Buddhist and they are influenced by the Buddhist culture, but they also practice the Hindu culture. And just have their habitats in the Bhagirathi basin, upper Bhagirathi basin. So in terms of population of these tribes and their sex ratio, Bhotia tribes I am talking about. So highest population is in Pithoragarh district,
It is followed by Chamoli district, then it is Nainital, Dehradun, and Uttarkasi. And in terms of their sex ratio, it is highest in the Bageshwar district and like follows. Some districts have very less, like Rudraprayag has very less हेलो sex ratio because of their नमस्ते distributions बताइए and because of the male and female and their workplace. So this is very typical. So I'm showing some pictures to you. You enjoy them. This is actually this is called the Johar क्या Valley, बोल रहे थे and there are some हाँ towns and some cities हाँ also and some rural हाँ areas. आवेदन देना पड़ता है This ना फिर is एक दो दिन में मिल Munsiari जाता है is दो called तीन दिन you know that the नहीं आज आवेदन Switzerland दोगे तो of दो तीन दिन Uttarakhand, बाद आपको very मिलेगा और beautiful तुरंत नहीं place, मिलता and this is located in the Johar नहीं नहीं Valley. कॉलेज बंद नहीं है ना This ऑफिस this खुला हुआ है another आवेदन आप picture you ऑफिस में can जमा see करेंगे that this is the है ना हाँ Gori Ganga कॉलेज में जाके ना ऑफिस में जब originating आवेदन from जमा the करेंगे Milan Glacier है ना तो in हम लोग the बताएंगे high आपको Himalaya, है ना and it हाँ meets with the Kali Ganga in Jaljevi border to Nepal. So these are some very picturesque landscape of these tribes. They have habitat. This is a group of peaks of high peaks of Panchacholi. The A photograph shows the one side, one face of Panchacholi. B shows the another uh, face of Panchacholi. I have the opportunity to track this 23-kilometer recently, and that Panchacholi is the origin place for the Dholi Ganga East. Dholi Ganga originates from here and it meets with the Kali Ganga at Tawaghat. So these are another pictures of the Dharma Valley. They have the highland habitats. They are remain closed during the winter and summer. They have some apple orchards there. These places, apple, potato, and rajma are grown largely, and they also trade it, sell it outside of the state in UP and other parts. So this is very rich for the temperate fruits and also potato and rajma these areas. But because of the snow-capped area, 6 months, nothing can be done here. This valley is called the Byas Valley, where the Adi Kailash is located. And this is Gunji village, the last village of the Kali Kumaon region, very beautiful village, where the Byasi people, they live, one of the tribe of the Bhotia. And then you can see that Om Parvat, and there is also Parvati Kund. And this area is very ritual and very cultural also, and it has cultural significance. And yeah, it is known for the pilgrimage, highland pilgrimage of this Adi Kailash, and it is on the way to the Kailash Mansarovar route. So this is actually the this one Jadung village. Jadung village was completely destroyed in 1962 at the time of Chinese aggression on India. The people all moved from the Jadung village to the valley regions. Now the state government has started resettlement of the people of Jadung village. They have started their homestay tourism. Some they have already constructed some houses for homestay, and because that is a very that very important and uh, very different and very peculiar type of tribes. They have their temples also called Lal Devta. As I told you, they follow Buddhism and Hinduism together. They have Lord Shiva, their deity, and also the Buddha, also their folk deity. These are the Bhotia women and their traditional attires. They have lots of jewelries, and the clothes are woolen because this region is, as I told you, located above 3,000 meter, and they have very cold during the winter, even summer. So they have all woolen clothes, and they have rich cultural heritage, and everything they enjoy with their. And they are protecting us also, the three districts. They are border districts. But now there is lots of out migration. I will show you. This is a Milan village located in the, that along the Gori Ganga, and above this is Milan Glacier. So the entire village was destroyed and out migrated during 1962 when there was Chinese aggression.
And now the government has a scheme to rehabilitate these villages. Very picturesque. If you have time, you just travel there, you trek there, because there are many trekking routes to visit these places. But during summer, you have to go. Winter is not much possible. So this is what how they people they live and they ruin now, because Bhotia tribes are becoming rich because government of India a scheme of this scheduled tribes reservation. So many of them has become very good officers and professors, and they have good occupations also. But yeah, but their homeland, their native places are ruined. These are their major occupations. They rear animals, mainly goats, sheep, and lambs. And another picture, you see that how they smoke the meat in their kitchen, and after some times they eat it. So this is different because it is the Tibeto-Mongol race, Indo-Tibeto-Mongol race. So they have different culture than to our India. And then you see they have main occupation of this also extracting wool from sheep, and then they also making handicrafts, woolen cloths, and this is their something. And during winter, this is actually Dantu village located in 4,000 meters. During winter, the entire village is locked, closed. They have gone down, and they have protecting their houses like this. In first picture, you can see. And another is yak in the village. They though the people have went for the seasonal migration to Dharchula and the Kali Ganga Valley, but they had the yak still living there. And with this, I thank you very much. This is the confluence point of the Kali Ganga and Gori Ganga. Gori and Kali, these two Hindi words. And with this, I don't want to take your much time because the time is so limited. Anyway, so I made it very short. And again, once again, I thank you for invitation to the college, principal, faculty members, and also Dr. Narendra ji. Thank you very much. Thank you so much, sir, for this informative presentation of yours. Thank you so much, sir. Okay, welcome. Yes, sir. Yes, sir. As we reach the conclusion of this grand inaugural ceremony, I invite the convener of the conference, Dr. Amit Chandra, Principal of Chaitanya College of Education, Pamgarh, to deliver the official vote of thanks. Please, sir. Thank you, Bhavna. Thank you so much. सभी को नमस्कार. Respected Chief Guest, Honorable Professor Vinay Chauhan, Vice Chancellor, Sahid Nankumar Patel University, Raigad, Chhattisgarh. Our respected special guest, Dr. Tarun Dhandiwal, Registrar, Sahid Nankumar Patel, Vishwavidyalaya, Raigad, and Professor Garima Tiwari, Forestry and Wildlife, Guru Ghanshidas Vishwavidyalaya, Chhattisgarh. Our respected principal, Dr. V.K. Gupta sir, our respected patron, Mr. Viren Tiwari, Chairman, Governing Body, Chaitanya Science and Art, Autonomous College, Pamgarh, distinguished speakers, sorry, respected delegates, faculty members, researchers, students, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. It is my great privilege to propose the vote of thanks uh, and of this inaugural ceremony of this 2 days international conference on tribal development, challenging opportunity and sustainable development. First of all, I express my heartfelt gratitude to our Honorable Chief Guest Professor Vinay Chauhan for gracing this occasion with his esteemed presence and inspiring address. I sincerely thank our respected special guest, Dr. Tarun Dhardiwan and Professor Garima Tiwari for their gracious presence, valuable words, and encouragement. I also express my sincere gratitude to our respected Principal Dr. V.K. Gupta for his valuable guidance and support in making this academic event successful. My sincere gratitude
goes to our respected patron, Mr. Viren Tiwari sir, for his visionary leadership and continuous support. I also extend my heartfelt thanks to all the distinguished speakers, delegates, researchers, faculty members, student volunteers, and the organizing team for their valuable contribution and dedicated efforts. Finally, I thanks everyone who has contributed directly or indirectly to the success of this inaugural ceremony. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. I once again would like to thank all the dignitaries to join here with us globally. And now, for further proceeding, I would like to request Chanchal ma'am. Please, ma'am. थैंक यू रत्नाकर मैडम, हम लोग एकदम सही समय में चल रहा है, राइट टाइम. थैंक यू. Sir, I'm audible. Yes. Yes ma'am, yes ma'am. Good afternoon to one and all, respected chairperson, co-chairperson, distinguished delegates, research scholars, faculty members, and dear participants. It is my privilege to welcome you all to first technical session of our 2 days international conference on multidisciplinary research in tribal development, challenges, opportunities, and sustainable development. This session aims to provide a platform for researchers to present their innovative ideas and scholarly work, fostering meaningful discussions and academic collaboration. I respectfully invite our इतने से esteemed chairperson, प्रेजेंट करेंगे Dr. मतलब Kaberi Dabhadkar, Professor and Head ये जुड़ा Department है कि of नहीं. Geography, Government Bilasa PG College, Bilaspur, Chhattisgarh, to kindly grace the chair. Welcome, ma'am. I also extend a warm welcome to our co-chairperson, Dr. Nitin Kumar Mishra, University of Allahabad, Uttar Pradesh. Welcome, sir. I, Mrs. Chanchal Yadav, Assistant Professor, Department of English, Chaitanya Science and Arts, Autonomous College, Pamgarh, and it is my privilege to serve as the moderator of this session. The proceeding of this session will be documented by our rapporteur, Mr. Deepak Kumar Pal, sir. Before we begin the paper presentation, I would like to request all presenters to kindly adhere to the following कैमरा बंद. guidelines. Each presenter will have 5 to 7 minutes for the presentation. Please keep गेम your खत्म. presentation focused on the conference theme. एक चेक. Kindly maintain the allotted time to the end. Paper presentation session. Selvi ma'am, sir. Yes, definitely you go ahead for the Thank you presentation. so much, ma'am. Now, I invite our first presenter, Dr. Ranu Verma, Assistant Professor Sociology, Sarojini Naidu Government Girls PG Autonomous College, Bhopal, to present the research paper titled जनजातीय महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता. Dr. Ranu Verma. मैडम नेक्स्ट नाम लेते जाइए. Okay, sir. Next, I invite जुड़ नहीं मंगा रहा Papu हूँ. Kumar, research scholar, PG Department of Psychology, North Campus, Bhupendra Narayan Mandal, University, Madhepura. An empirical analysis of life satisfaction among marginalized caste with a specific focus on scheduled tribes population. Papu Kumar. हेलो. जी सर. हेलो. हेलो मैम. जी आपकी आवाज आ रही है. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. मेरा नाम पप्पू कुमार, रिसर्च स्कॉलर, BNMU मधेपुरा बिहार से हूँ. मैं समस्त आयोजनकर्ता को
धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरा टॉपिक है एन imperial analysis of life stratifications among marginalized castes with a specific focus on scantily tribe population. इसका शीर्षक है लाइफ सर्टिफिकेशन among historically marginalized communities is a critical metric of social equality, well-being, and inclusive development. This study presents an imperial analysis of life stratifications among marginalized castes with a specific focus on scandalized tribal populations, utilizing a mixed method approach. The research evaluates how socioeconomic disparities, cultural presentifications, structural discriminations, and institutional access shapes subjective well-being among tribal individuals. Standard instrument in doing the certifications with life scandal were deployed deployed alongside cumulative narrative assessment across targeted tribal habitations. The findings reveal a nomicide relationship between strungal, operative and subjective life satisfactions, will system, suspected marginalized caste economic insecurely and limited across the healthcare and formal education narratively impact life satisfactions, strong communal solidarity, indigenous opiate methods, and close cultural affiliation with traditional norms have a significant psychological efforts. Furthermore, the study highlights that previous social mobility and community and ownership significantly enhance overall well-being. Ultimately, the paper across the genetics development parliament often fail to account for indigenous paper fact of fulfillment. It reflects the need for culturally into policy interventions that protect indigenous rights, stringent social economics, country and further genius social inclusion. जय भारत. मेरे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका सार एंड सब्सटेंस थोड़ा हिंदी में समझाएंगे. आपने क्या करना चाहा था? ठीक है ना. आप क्या कहना चाह रहे थे ये थोड़ा बताएंगे. आपने जो मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल का जो सेटिस्फेक्शन स्टडी किया है, लाइफ सेटिस्फेक्शन, उससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला, थोड़ा कहेंगे उसे हिंदी में बताइए. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हाँ, ध्यान मैंने दिया है. हस्ती पर आने वाली जातियों के बीच मुश्किल पर एक विश्लेषण हमने किया है. ये हमने कहा है ऐतिहासिक रूप से हस्ती पर मूल समुदायों के बीच की संतुष्टि, सामाजिक समानता, कल्याण और समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण पैमाना है. यह अध्ययन हस्ती की जातियों के बीच जीवन की संतुष्टि का एक अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें
एसटी की आबादी पर विशेष ध्यान दिया गया है। मिश्रित पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए यह शोध मूल्यांकन करता है कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं, सांस्कृतिक संरक्षण संरचनाएं, भेदभाव और संस्थागत पहुंच आदिवासी व्यक्तियों के बीच व्यक्तिपरक कल्याण को कैसे आकार देती है। लक्षित आदिवासी बस्तियों में गुणात्मक तथा आकलनों के साथ साथ स्पेशल विद मानकीकृत उपकरणों को तैनात किया गया है। निष्कर्ष संरचनात्मक अभाव और व्यक्तिपरक जीवन संतुष्टि के बीच एक सूक्ष्म संबंध प्रकट करते हैं, जबकि प्रणालीगत आवासीय प्रदान आर्थिक और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तथा औपचारिक शिक्षा तक सीमित पहुंच जीवन की संतुष्टि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। मजबूत सांप्रदायिक एकजुटता, स्वदेशी मुकाबलापन और पारंपरिक भूमि के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बफर के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा अध्ययन इस बात पर भी प्रकाश हमने डाला है कि कथित सामाजिक गतिविधियां सामुदायिक भूमि तथा स्वामित्व समग्र ज्ञान को काफी हद तक बढ़ाते हैं। अंत में मैंने यह किया है कि समान विकास प्रतिमान अक्सर के स्वदेशी दृष्टिकोण को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं या सांस्कृतिक रूप से एकीकृत व्यक्तिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर जोर देता है, जो स्वदेशी अधिकारों की रक्षा करते हैं, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं और वास्तविक सामाजिक समावेश को बढ़ावा देते हैं। Thank you very Okay. Next, I invite Dr. Arjun Singh Baghel, Assistant Professor, Commerce, PM, CEO, COE, Rani Durgavati Government PG College, Mandla, Madhya Pradesh, to present the research paper titled Tribal Tourism, Ecotourism and Cultural Tourism. Dr. Arjun Singh Baghel. Papu Kumar, please unmute yourself. एक से 9 बजे से म्यूट करना था, unmute एक बोल स्लॉट और रही बचे थे, दूध बचे हूँ। डॉक्टर दो Assistant Professor, History, Government College, Gopura, Shadol, to present the research paper titled Green Economy and Tribal Livelihood. Dr. Kanti Sahu. Next, Suprabha Bharti, Research Scholar, मैम मार्किंग करिएगा ना absent University PG Department of Psychology, Hello, Bhupendra very good Narayan. afternoon. Good afternoon. Hello, very good afternoon to all respected Suprabha sir Bharti. and madam and Suprabha, all okay. participants. Myself, Suprabha Bharti. I am a research scholar, DN Mandal University, Madhepura, Bihar. So my title is correction, please. My title is Prevalence of Occupational Stress among +2 teachers, scheduled tribes working in upgraded schools in Bihar. So, this study investigates the prevalence, key determinants, and psychological dimensions of occupational stress among scheduled tribes, +2 teachers employed in newly upgraded schools across Bihar. While the मैडम state वीडियो government's कैमरा ऑन करेंगे। policy of upgrading secondary schools. Yes, sir. Participants kindly request to all, master on your video. Okay, sir. Then I continue. While the state government's policy of upgrading secondary schools aim to expand access to
senior secondary education in rural regions. It introduced severe administrative, infrastructural, and pedagogical bottlenecks. Utilizing a descriptive survey design, empirical data were gathered from a stratified sample of ST plus 2 educators through standardized occupational stress. Remarkably high prevalence of occupational stress within this demographic. Primary stress factors include inadequate laboratory and classroom infrastructure, excessive non-academic administrative burdens, heavy teaching workloads, delayed promotion, and persistent socio-cultural marginalization. हाँ The नैन्सी study highlights how structural मैं आज institutional देखा था ना कैसे सेमिनार हो stressors रहा है intersect with हाँ social identity dynamics, मुझसे पता लगी सर से क्या significantly impairing educators' हाँ क्या mental well-being, job satisfactions, and teaching हाँ efficacy. To mitigate these challenges, आप बस the study emphasizes मैं the necessity हाँ तभी नहीं of था हाँ targeted policy हाँ interventions, including ठीक है मैं infrastructure जैसे improvement, मैं क्या कर transparent career progression हाँ अभी frameworks, workload हाँ rationalization, and dedicated नहीं नहीं career हाँ progression and dedicated मेरी स्टडी में नहीं लगती psychosocial support systems for scheduled tribes teacher in नहीं Bihar. नहीं Means जो बिहार में शेड्यूल ट्राइब टीचर सब हैं उनको बहुत सारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस से गुजरना हाँ पड़ता रखो है। बात की पता चली जैसे अगर कक्षा मतलब कक्षा बताओ मुझे ये छोटी होती है और बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं क्लास में, तो उससे भी उनको ठीक है बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। बताओ इन सब के लिए भी ठीक बहुत सारा इसमें ये किया गया है कि कैसे सरकार को इस पे काम करना चाहिए। इसमें बहुत सारे नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। हाँ कभी कभी इनको टाइम पे डोंट ये पेमेंट भी नहीं मिलता है और उन्हें डोंट वरी सर बोलो करियर में कुछ रहेगा मैं पदोन्नति भी बताऊँ नहीं होती है उनकी, जिस कारण उनसे उन्हें बहुत सारे वर्कलोड हो जाते हैं, उनको पदोन्नति नहीं होती जिस कारण वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये सब पे काम करने की जरूरत है सरकार को कि कि उन्हें नीतिगत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ताकि उनके मानसिक स्वास्थ्य और कार्य संतुष्टि में और शिक्षण क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित न करे। गैर शैक्षणिक और प्रशासनिक बोझ भी बहुत सारा इन पर आता है। भारी शिक्षण कार्यभार होता है जिस कारण ये फैमिली सपोर्ट भी ज्यादा नहीं हो पाता है। वर्कलोड ज्यादा होने के कारण ये फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं और घर में भी तनाव हो जाता है। टाइम पे सैलरी न मिलने पे भी इन्हें इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है जिससे घर में इस कारण से झगड़े भी होते हैं और भी देन यही है इसमें इस अध्ययन में कि बिहार में जो भी अनुसूचित जाति के टीचर्स हैं उनके लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर बल देना चाहिए जिनमें अवसंरचना सुधार, पारदर्शी करियर प्रगति, रूपरेखा, कार्यभार का युक्तिकरण और समर्पित मनोसामाजिक सहायता प्रदान प्रणाली शामिल है। That's all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. If anybody Thank you for wants your to ask me informative presentation. any questions, Um, if anybody if wants to anybody wants ask to any ask, question, ma'am, please carry please on. tell me. Okay, ma'am. Next, I invite Dheeraj Kumar, research scholar from Department of Psychology, North Campus, Bhupendra Narayan Mandal University, with their topic Prevalence of Depression Among
Sexting addicted youths with special reference to tribal youths. Neeraj Kumar. Yes, ma'am. Hello. Yes, sir, you are audible. Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, respected professor, evaluators, my fellow peers. My name is Neeraj Kumar. Today, rapidly evolving worlds, the challenges we faces are become more complex by the day to stay ahead. Constantly a need of fresh perspectives, a smarter solution. I'm here today to represent a research paper titled Prevalence of Depression Among Sexting Addicted Youths with a special reference to tribal youths. मीन्स विशेष रूप से जनजातीय युवाओं के संदर्भ में सेक्सटिंग के आदि युवाओं के बीच अवसाद मतलब डिप्रेशन का प्रसार Rapid digitalization has accelerated hyperconnectivity among young demographics, giving rise to behavioral health concerns such as digital addiction and risky online sexual behaviors. This empirical study investigate the prevalence of depression among sexting addicted youths, focusing especially on indigenous tribes youths populations. Utilize a cross-sectional mixed method design. Data were collected from a targeted sample of a tribal adolescents and a young adults aged between even 15 to 24 using standardized psychological assessments including the patient's health questionnaires, PHQ-9 and adapted behavioral sexting addiction scales. The finding indicates a heightened prevalence of a clinical depression among the youths who exhibit compulsive texting behaviors. Not only tribal youths demonstrate distinct vulnerability patterns where digital compulsive behavior intersects with a systematic social economic marginalization, limited mental health, literacy, and cultural identity designs. Factors such as privacy laws, peer pressures, digital exploitations, and internal conflicts. Significantly, exploitations and internal conflicts significantly compound depressive symptoms. The study underscores the critical needs for a culture-sensitive mental health frameworks, digital illiteracy interventions, and a community-driven, even like counseling programs tailored to mitigate psychological distress and protect digital safety among vulnerable tribes youth communities. Is there any questions? Voice नहीं आ रही. Ma'am, sir, is there any question? Okay, thank you, sir, for the next one. Okay, thank you so much, sir, for your informative presentation. Thank you. Next, Nidhish Chaube, Assistant Professor, Electronics, BP Vipri College, Bilaspur, to present the research paper titled Tribal Development. Nitish Chaube. Next, Gopishwar Sai, Assistant Professor, Geography, Government Kalidas College, Pratappur, Surajpur, Chhattisgarh, to present the research paper titled Tribal Development. Gopishwar. Next, Vandana Kumari, Research Scholar, Department of Psychology from North Campus, Bhupendra Narayan Mandal University, Midapur, Bihar. Good afternoon, all of you. To मेरा नाम present the title Family Adjustment of Tribal Working Women in India, a critical review. Good afternoon, all of you. मेरा नाम वंदना कुमारी है। मैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान विभाग की शोधार्थी हूँ
मेरा टाइटल है भारत में आदिवासी कामकाजी महिलाओं का पारिवारिक समायोजन, एक आलोचनात्मक समीक्षा। यह आलोचनात्मक समीक्षा भारत में कामकाजी आदिवासी महिलाओं के बीच पारिवारिक समायोजन की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए मौजूदा सामाजिक मनोवैज्ञानिक साहित्य का संश्लेषण करती है। परंपरागत रूप से आदिवासी महिलाओं ने कृषि, वन संग्रह और कृषि गृह प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा और आर्थिक अवसरों में विस्तार के साथ आदिवासी महिलाओं की बढ़ती संख्या और पारंपरिक भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। शोध से यह पता चला है कि लाभकारी और पारंपरिक भूमिका में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। शोध से यह पता चला है कि रोजगार से आदिवासी महिलाओं में आत्मसम्मान, सामाजिक आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। हालांकि इसके साथ ही यह जटिल दोहरी भूमिका के संघर्षों को भी जन्म देती है, क्योंकि महिलाओं को घरेलू कर्तव्य के साथ साथ व्यवहारिक मांगों को भी पूरा करना पड़ता है, जबकि घरेलू श्रम विवरण में कोई समान बदलाव नहीं होता। सफल पारिवारिक समायोजन के मुख्य निर्धारक में पति का सहयोग, रिश्तेदार सहायता, नेटवर्क, व्यवहारिक संरचना और सांस्कृतिक समान करने में तंत्र शामिल है, जबकि रोजगार समग्र भावनात्मक, आलोचनात्मक और सामाजिक पहचान को बढ़ावा देती है। लगातार घरेलू कार्यभार और संरचनात्मक आत्मसम्मान पारिवारिक संतुलन के लिए प्रमुख बाधाएं बनी है। यह समीक्षा लैंगिक रूप से संवेदनशील सामुदायिक समर्थ, घरेलू श्रम के समान विभाजन और संग्रह संतुलन सुनिश्चित करने के लिए लक्षित नीतिगत ढांचों की महत्वपूर्ण आवश्यकता का प्रकाश डालती है। भारत में कामकाजी महिलाओं, आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण और पारिवारिक कल्याण। मुख्य शब्द: आदिवासी महिलाओं, पारिवारिक समायोजन, कामकाजी महिलाएं, दोहरी भूमिका का संग्रह, आर्थिक शक्तिकरण, व्यवहारिक समस्या, कार्य जीवन संतुलन, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। थैंक यू। Thank you, ma'am, for your presentation. Next, I invite Dr. Jasmeet Singh, Professor Ayurveda, Lal Bahadur Shastri, Mahila, Ayurvedic College and Hospital, Bilaspur, Yamunanagar, Haryana, to present the research paper titled Integrating Ayurveda into Tribal Healthcare for Sustainable Community Development, a Multidisciplinary Approach. Please, sir. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Can I share my PPT? Of course, sir. Can I share my PPT? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ma'am. Good afternoon to everyone. I am Dr. Jasmeet Singh. My presentation topic is integrating Ayurveda into the tribal healthcare for sustainable community development, a multidisciplinary approach. The background of this study that India has the more than of the 700 tribal community, which is a rich of the indigenous healthcare tradition and a traditional healing depend upon of the medicinal plant and the local knowledge, and tribal population continue to the experience of the poor healthcare accessibility, malnutrition, maternal and child healthcare problem, and infectious disease, and increasing the lifestyle disorder. And Ayurveda provide a preventive, holistic, and culturally compatible healthcare system. And key message of that of the Ayurveda can complement and not replace of the existing healthcare services for sustainable
process of the rich indigenous healthcare knowledge and medicinal plant tradition and Ayurveda promote of the holistic and sustainable healthcare and integrating of the Ayurveda with the tribal healthcare can improve the accessibility, community health and biodiversity conservation, and the study examining the role of the Ayurveda in achieving of the sustainable tribal healthcare and community development. And the need of this study that provide of the preservation of the indigenous knowledge and strengthening the preventive healthcare, affordable healthcare delivery and conservation of the biomedical biodiversity and the community empowerment and achievement of the sustainable development goal. And integrating Ayurveda into the tribal healthcare is essentially for the healthy individual, empowered community and a sustainable future. And conceptual link between of the Ayurveda and sustainable tribal development that provide of the Ayurveda provide of the holistic and preventive healthcare, indigenous tribal knowledge and medicinal plant and healthy lifestyle and community participation and education and improved health and biodiversity conservation and sustainable tribal development. And these are the literature review of the study data of the WHO 2023 and issue of the IUS 2023 and ICMR 2021 and Journal of the Pharmacology 2022 and recent Sustainable Research 2024 that provide of the evidence-based Ayurveda, indigenous knowledge and community participation and sustainable tribal healthcare. And the research gap of the study that existing literature mainly focus on the ethno-medicinal plant, traditional healers and herbal medicine documentation, and the gap that provide of however limited evidence exists on integrating Ayurveda healthcare model, community participation, preventive healthcare, digital documentation and sustainable development. And aim and the object of the study that aim to evaluate the role of the Ayurveda in strengthening the tribal healthcare through the integration with indigenous knowledge and sustainable development, and objective that provide of the assess awareness of the Ayurveda study, healthcare utilization, evaluate the medicinal plant conservation and assess the community participation and analyzing the strategical relationship and develop an integrated healthcare model. And these are the hypothesis of study that main hypothesis, null hypothesis as zero, that there is a no statistically significant relationship between the utilization of the Ayurveda healthcare and the health status of the tribal community, and H1 that of the alternative hypothesis there is a statistically significant positive relation between the utilization of Ayurvedic healthcare and improve healthcare outcome the tribal community. And these are the sub hypotheses H01 and H11, H2 and H12, H3 and H30. And the research frame of this study, the tribal community, awareness of Ayurveda, community participation, medicinal plant conservation, preventive healthcare practice, improve community healthcare, and sustainable tribal development, and achieve the goal of SDG goal 3, 4, 5, 8, 13, 15, and 17. And the research methodology of this study, that was research design of the mixed method research, qualitative and quantitative sampling techniques, that of the multi-stage stratified random sampling, and the sample size 120 respondent, tribal man and woman and traditional healer, worker, village leader and Ayurvedic medical officer, and study area that of the Madhya Pradesh and Uttarakhand, and data collection structure, questionnaire, semi-structure, interview, focus, group discussion, field observation, and secondary resources, WHO, Ministry of Ayush, ICMR, and journals, and that of the research tool, 5-point linked scale, questionnaire and statistical tool, frequency and percent mean and standard deviation, chi-scale, observation, one ANOVA test are used. And the study participant that of the tribal woman 48, tribal man 36, traditional healer 12, and Asha worker 10, and village leader 8, and Ayurvedic medical officer 6, that are total of the 120. And these are the statistical analysis used in statistical test, that of the frequency, percentage, mean, standard deviation, chi-scale test, presence, correlation one way, and what test is also used. And the awareness of Ayurveda that provide of the high 73.3 and moderate 20 and low 6.7, and interpretation of the data nearly 3/4 of the respondent process of the good awareness of Ayurvedic health care. And these are the graphical pie chart representation of this data. And the utilization of Ayurveda regular use 70% one and 3. And the key finding, Ayurveda remain the culturally acceptable and affordable and accessible. And these are the pie chart of the representation. And the community participation, major activity, medicine, plant conservation 68.3%, knowledge sharing 66.7%, health awareness
60.2% and herbal garden 60.8% that show the community participation strengthening sustainable healthcare. And these are the representation of this data, and these are the statistical finding of the chi-square test 16.84 and p is equal to 0.007, correlation that r is equal to 0.72 and ANOVA test f is equal to 8.67 and p is equal to 0.003, that of the significant difference among of the healthcare utilization of the group. And these are the chi-square analysis test and the Pearson one-way ANOVA test results, and major finding that provide of the high awareness of the Ayurveda, high utilization of the herbal medicine, active medicine, plant conservation, strong community participation, better preventive healthcare, and significant improved in healthcare outcome. And these are the discussion. Ayurveda complements the tribal healthcare, preventive healthcare, reduce the disease burden, herbal medicine remain socially acceptable, and community participation enhance the sustainability, and digital technology improve the documentation and healthcare access. And these are the proposed conceptual framework that of the awareness of Ayurveda, indigenous knowledge of practice, and community participation, medicine, plant conservation, health, education and prevention, and digital health documentation, and that provide the improve tribal health outcome and sustainable community development. And these are the integrated model for the sustainable tribal healthcare, Ayurveda, indigenous knowledge system, community participation, preventive health, digital health documentation, medicine, plant conservation, and improve the tribal health outcome and sustainable development, community development. And these are the recommendations that provide of the integrated Ayurveda into the tribal primary health care, establish community herbal garden, and promote of the medicine and plant conservation, and train the Asha worker in the Ayurveda practice care, and expand of the telemedicine and digital documentation, indigenous knowledge, and encourage the multidisciplinary research and strengthening the Ayush tribal affair collaborations. And these are the future research large study AI assistant tribal healthcare GIS mapping of the medicinal plant telemedicine expansion wearable health care monitoring and clinical validation of the tribal medicinal plant and policy based implementations research. And these are the policy implications that of the Ayush integration, tribal healthcare, strengthening medicinal plant conservation, digital health infrastructure, and community-based healthcare model, and sustainable livelihood generations. And these are the conclusion of this study that of the Ayurveda provide a preventive and holistic healthcare approach, indigenous knowledge and Ayurveda complement each other, and community participation improve of the healthcare outcome and conservation of the medicinal plant, support of the biodiversity, and integration contribute toward the sustainable development goal and sustainable tribal development. And the Ayurveda data is the indigenous wisdom and community action, the pathway to a healthy, sustainable, and empowered tribal future. And these are the references used in my study. And thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for your presentation. May I request our respected chairperson and co-chairperson to offer their observation or question, if any. Is there question, any, ma'am? Yeah, your paper is excellent, Dr. Jasbir Singh. And you truly said that the integration of community participation is very essential, as we know that tribals they have their own medicinal system as far as they have their own tradition of healing of and disease, and they have myths and also mantra, tantra, and like that. But integration of modern healthcare with this traditional healthcare as well as Ayurveda healthcare is essential for the overall tribal healthcare. डबल माइक ऑन है क्या? So, but your study is specifically based on Ayurveda, so it is excellent presentation. मैम उधर से मैम की तरफ से ना हमारी तरफ से Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Shall we continue for further? Okay, next, I invite Dr. Rakhi Vanshkar, Assistant Professor, Department of Political Science from Government Degree College, Bhagwa, Mandla, to present the research paper titled
आदिवासी अधिकार, संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी सुरक्षा सुरक्षा। डॉक्टर राखी वंशकर। नेक्स्ट, भावना के कोठान, एसोसिएट प्रोफेसर, एचओडी, होम साइंस डिपार्टमेंट, श्री रंग नव चेतना महिला आर्ट्स कॉलेज, भरूच, गुजरात, to present the research paper titled जनजातीय स्वास्थ्य पोषण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौतियां, एक समकालीन अध्ययन। नेक्स्ट, अम्बिकेश प्रताप सिंह, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, to present the research paper titled tribal development. अम्बिकेश प्रताप सिंह। अम्बिकेश प्रताप सिंह, Ambikesh Pratap Singh, please unmute yourself. Next, Dr. Revel Singh, Assistant Professor, Physics, PMCOE, SBN Government PG College, Barwani, Madhya Pradesh, to present the research paper titled Structural, Dielectric and Magnetic Properties of BFO, GFO, ZFO, Multi-Fluoric Composite Ceramics. Dr. Rebel Singh. Next, Dr. Khyati Buddhisagar Bhatt, in charge principal, Shri Rang Navchetna Mahila Arts College, Bharuch, Gujarat, to present the research paper titled Mental Health and Well-being of Tribal Communities, Challenges, Determinants, and Policy Interventions. Dr. Niyati Buddhisagar Bhatt. Next, Dr. Madhusudan Chaube, Professor, Department of History, PM, COE, SBN, Government College, Government PG College, Barwani, to present the research paper titled A Study of Tribal Arts, Pithora, in Nimar region of Madhya Pradesh. Dr. Madhusudan Chaube. Yes. Not present. Which number is going on? Okay. Hello. Ma'am, which Dr. number is Madhusudan going on? Chaube. Sir, it's a 17, 16. 16. One 116. Yes, Reference 116. number. Reference number. Okay, sir. Reference Reference. number 116. Okay, okay, thank you. Next, reference number 117. Prosenjit Murmu, Assistant Professor, Geography, Ekra Sarda, Shashi Bhushan College, to present the research paper titled Livelihood, Sustainability and Diversity Indices as Tools for Evaluating Tribal Development in Man Bazar Block 1, Purulia District, West Bengal. Prosenjit, not present. Next, Dr. Samina Qureshi, Assistant Professor, Department of Education,
To present the research paper titled जनजातीय विकास के लिए शिक्षा का बहुआयामी स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में डॉक्टर समीना कुरैशी। नेक्स्ट शर्मिता शर्मिता घुराई, रिसर्च स्कॉलर, सोशल साइंस, RKDF University Bhopal, to present the research paper titled Climate-Induced Migration and Demographic Dynamics in Coastal Purba Midnapur, West Bengal. Absent. Next, last one. I invite Dr. V. Shivakumar, scientist, horticulture, Dr. Vishnu, Regional Horticulture Research Station, Govt, East Godavari, Andhra Pradesh, to present the research paper titled Value Chain Approach for Promotion of Spices Farming Systems in the Eastern Ghats region of Andhra Pradesh. Dr. V. Shivkumar. Ma'am, sir, shall we close? Hello, ma'am. Please, My number hello. is 126. Aman Gaurav. Can please check? 26, sir. You are in technical second, sir. Okay, Technical okay, session ma'am. second. Huh. Second. Okay, Yes, sir. okay. So, I sincerely thanks our respected chairperson, co-chairperson, all presenters, delegates, and participants for making technical session one highly engaged and academically enriching. A special thanks to our researchers. With this technical session one comes to a close. Thank you all and have a productive conference. Thank you so much. I also want to express my sincere thanks to organizer for giving me opportunity to be a part of this 2 days international gathering, which is discussed on an emerging topic, the tribal development. As far as our Chhattisgarh is concerned, it is very essential to talk, rethink about that. You know? I again express my sincere thanks for that. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now we will proceed for technical session second. नितिन मिश्रा जी का कॉन्क्लूशन हो गई? No, sir. No, sir. नितिन मिश्रा जी प्रेजेंट है? को चेयरपर्सन? चलिए मैडम, ठीक है, कॉन्क्लूड। ओके सर, सेकंड सेशन की तरफ चलते हैं हम। हेलो हेलो। Yes, sir. Sir, please summarize this session. Okay, sir. The session is very interesting, and a lot of papers are presented in this session. बेसिकली सेशन में जो बातें हुई वो आदिवासी समुदाय के जनरली वर्कफोर्स से रिलेटेड, उनके अप्रोचेस से रिलेटेड, उनकी इकोनॉमी से रिलेटेड, और जैसा कि सेमिनार का थीम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है,
जिसमें ट्राइबल डेवलपमेंट से रिलेटेड उनकी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस से रिलेटेड बातें की गई। जहाँ तक हम लोग जानते हैं, इफ यू टेक द केस स्टडी एज ए छत्तीसगढ़, there are a lot of tribal groups are residing in that particular states, but in the government point of view, as well not of the state as also in the nation, डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को रन कराए जा रहे हैं, चाहे उनकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के से रिलेटेड हो। इन सभी पॉइंट्स ऑफ व्यू से प्रेजेंटर्स ने काफ़ी अच्छा प्रेजेंट्स किया है। समराइज करने की जहाँ तक बात है तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा टेक्निकल सेशंस जो है काफ़ी फोकस्ड रहा है ट्राइबल्स के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर। So my best wishes to organizer and the committee to hold this technical sessions. Thank you. Thank you so much, sir. With this, the technical session 1 comes to a close. So once again, thank you all and have a productive conference. Thank you so much. Dr. Sali Oza, madam, please continue. Next technical session, our respected chairperson, Dr. Jagdish Samanta, Associate Professor, Head ITEP, Salinsan College, Autonomous Siliguri, West Bengal, Co-Chairperson, Dr. Harpreet Singh, Associate Professor, Geography, Institute of Science, Banaras Hindu University, Varanasi, and also session moderator, Dr. Fadhillah Shelsa, madam, Assistant Professor Hindi, Chaitanya Science and Arts College, Autonomous Palmghat, Chhattisgarh, India, and deputy of their session, Mr. Raja, Assistant Professor Chemistry. Dr. Ajay, madam, over to you, please. हेलो, थैंक यू सर। हेलो, हाँ सर, ये नमस्कार। दिनेश सर बोल रहा हूँ सर मैं। आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका विषय है यहाँ देना ट्राइबल डेवलपमेंट चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी वो क्या एंड होगा एंट्रेंस वाला? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें आप सभी का स्वागत है। नहीं तो वहाँ पे एंट्रेंस वाला हो गया कि जो एंट्री कर आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं डॉक्टर शैली ओझा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, चैतन्य साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज, ऑटोनोमस पामगढ़, आप सभी का महाविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस दूसरे टेक्निकल सेशन में हमारे साथ चेयरपर्सन के रूप में डॉक्टर जगदीश सामंता सर हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर और हेड है ITEP सालिसन कॉलेज ऑटोनोमस सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही को चेयरपर्सन के रूप में हमारे साथ डॉक्टर हरप्रीत सिंह सर उपस्थित हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम को, आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं हमारे चेयरपर्सन और को चेयरपर्सन की अनुमति से इस वेबिनार को शुरू करने की अनुमति चाहूंगी। सर, अनुमति है। Good afternoon, everyone. Is I'm audible and visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. First of all, thank you everyone for inviting me to such kind of huge international seminar. I would like to thank the all organizers, the convener, all the persons who are involving with this seminar. It's a very interactive and informative seminar. And from my side, you can start your technical session too. And I hope this session will give us the enormous kind of information, and together we can achieve some scholarly things. Thank you. थैंक यू सर। आज के इस टेक्निकल सेशन में सबसे पहले शोध पत्र को प्रस्तुत करने के लिए मैं डॉक्टर प्रभा भदौरिया मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सहायक प्राध्यापक हैं इतिहास sorry ma'am, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। Sorry, ma'am, I just interrupt you. Before starting this session, I would like to
tell some basic information and content to the every paper presenter that they have to finish their paper in between 5 minutes, and they need to focus only on the introduction, objective, hypothesis, and findings. Okay, and whenever they are presenting, they need to open their videos. Yes, thank you. जी थैंक यू सर। सर आपकी अनुमति से पहले शोध पत्र को प्रस्तुत करने के लिए मैं डॉक्टर प्रभा भदौरिया मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सहायक प्राध्यापक हैं इतिहास की राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना मध्य प्रदेश से। डॉक्टर प्रभा भदौरिया मैडम। अगले शोध पत्र को प्रस्तुत करने के लिए मैं डॉक्टर भावना बावरा मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी जियोलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज नागोद सतना से। डॉक्टर भावना बावरा मैडम। मैडम क्या सुन पा रही हैं आप मुझे? मैडम तो है, दिख रहा है भावना मैडम। डॉक्टर भावना बावरा मैडम। नेक्स्ट अगले शोध पत्र को प्रस्तुत करने के लिए मैं डॉक्टर कावेरी दाभड़कर मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। हेलो हेलो जी मैडम जी आपको सुन पा रहे हैं मैडम? मैं डॉक्टर मैं डॉक्टर सुशीला मैडम के मोबाइल से मैं अपना पेपर प्रस्तुत करूंगी क्योंकि कुछ नेट इशू आ रहा है मेरे मोबाइल में। जी मैडम। तो एक सेकंड मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, रुकिए एक सेकंड। मोठा मोठा मैं अपना पीपीटी स्टार्ट करती हूँ। बहुत लोग पार्टिसिपेंट नहीं। स्क्रीन शेयर को परमिशन दीजिएगा मैडम, शायद दिक्कत होगी। जी देखते स्टार्ट ना, एक मिनट। वो ना रोटेट कर लीजिए तो इसमें क्या है जी आ जाए, फुल स्क्रीन में आ जाए, घुमा लीजिए मतलब। देख मैं क्या चाहता हूँ बात हो गई इसी स्टेप में मुश्किल तो उसके बने देखो ना बीच जो बीच में क्वेश्चन दिख पेपर रहा आते रहते हैं, फोन आते रहते हैं, बड़ा मुश्किल है। रोटेट एक सेकंड। मैं देखो जैसे इसी रिलेटेड नेट का कुछ इशू 2 दिन भी आ कमी रहा ना हुई नहीं, स्क्रीन आ गया मोबाइल का, आपका पीपीटी ऑन कीजिए आ जाएगा, तो दिख रहा है ऑलरेडी। हाँ अरे दिख मैंने रहा है, एक मिनट में ये करी ना। हाँ पावर पॉइंट वाला को ऑन कीजिए मैडम और उसको ना लैंड सेलेक्ट करिए। हाँ देख लेना। एक्सपोर्ट है तो ओपन विथ, किसमें करो ओपन विथ? ठीक है ना, पीडीएफ कर लीजिए, जो भी करेंगे आ जाएगा। किसमें कर रही हूँ बस इसको घुमा दीजिएगा मोबाइल को ना। दिख रहा है? हाँ आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन मोबाइल को ना लैंडस्केप करना है, लैंडस्केप। अरे ये इनका मोबाइल है ना, तो नहीं सुशीला मैडम का मोबाइल है ना, तो मैं वो नहीं कर पा रही हूँ मोबाइल को उनके घुमा मोबाइल दीजिए में ना, थोड़ा घुमा आप जो मोबाइल को रखे हैं ना उसको घुमा दीजिए। इनके मोबाइल में मैं कर नहीं पा रही हूँ। कंटिन्यू कीजिए मैडम। अगर आप मुझे सुन पा रहे तो मैं जस्ट प्रेजेंट करूँ क्या? जी 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 है बोलिए बोलिए। है ना? हेलो सुन पा रहे? जी मैडम आपकी आवाज आ रही है। तो मैं डायरेक्ट अपना प्रेजेंट अगर देख भी पा रहे, अगर आप मेरा पीपीटी देख पा रहे तो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। द टॉपिक ऑफ माय रिसर्च दिख इज रहा हेल्थ है एंड मैडम, दिख रहा न्यूट्रिशन है। ऑफ ट्राइबल वुमेन। ट्राइबल वुमेन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्राइबल जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है लगभग 104 मिलियन ट्राइबल्स है। 705 ट्राइबल्स आर प्रेजेंट इन India under sub-tribals. 8.6% of the country's population is tribal.
और ट्राइबल फर्टिलिटी की बात है तो 2.5 है। अगर हम ट्राइबल हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो एसटी पॉपुलेशन में अमंग मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा था। 50% डेथ जो थी वो ट्राइबल पॉपुलेशन की मलेरिया से हुई। इसके साथ साथ अगर अंडरवेट बच्चों के सोचेंगे तो यहाँ भी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा था। 25% pregnant and lactate women and 29 to 32% children had adequate intake of both protein and calories. At present, there are 75 tribal groups identified and categorized as particularly vulnerable tribal groups, and they have their different health issues. The estimated prevalence of pulmonary tuberculosis in the tribal community is significantly higher than the rest of the country. Leprosy proportion of ST is 18.5 all cases. 1 out of every 4 tribal adults suffering from hypertension, and so many diseases occurred in tribal areas. Because of physical problems, physical environment, and inaccessibility of healthcare services. As far as the maternal and infant healthcare is concerned, India also has one of the most highest global infant mortality rate, 14.7 deaths per 1,000 live births. Tribal communities in India bear a significant burden as they account for 50% of all maintained deaths of IMR of the country. These are the graph which indicates the higher infant mortality rate among the tribals. And that's which have the post in PSCs and CSCs are vacant and no healthcare services available. Although they establish the healthcare facilities there, but there is no doctor, there is no modern healthcare facilities or even traditional healthcare facilities in tribal area. And because of that, maternal and child health problems occurred. In combination with anemia is estimated to be responsible for 17 to 46% cases of maternal deaths. 51 various studies and surveys has showed the high prevalence of anemia among the tribal women. National हेल्थ सर्वे भी शो करता है कि 65% ट्राइबल वुमेन जो है वो एनीमिया से ग्रसित है। अब हम इनके फैक्टर्स की ओर जाते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो ट्राइबल एरिया में मैटरनल चाइल्ड हेल्थ जो प्रॉब्लम्स है वो आ रहे, इसके पीछे है एडिक्वेट और ट्रेन हेल्थ केयर वर्कफोर्स जो है उनकी कमी और हेल्थ फाइनेंसिंग, inadequate healthcare infrastructure, limited access of essential services, as well as अगर हम दूसरी तरफ बात देखेंगे तो मालन्यूट्रिशन भी ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 10% of tribal women receiving full antenatal care and only 18% of tribal women having institutional deliveries। मतलब ट्राइबल वुमेन को एंटीनेंटल केयर भी नहीं मिल पाती है और केवल 18% ट्राइबल वुमेन की डिलीवरी जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है। ट्राइबल चिल्ड्रन वर फाउंड टू हैव फुल वैक्सीनेशन रेट ऑफ ओनली 55.8, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो 62.0 है। सोशल एंड जोग्राफिकल आइसोलेशन एडवर्सली अफेक्ट द मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। और दूसरी अगर हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल चाइल्ड केयर प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्चर प्रैक्टिसेस नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन हेल्थ आउटकम्स of infants. For example, tribal women often bath newborn believing that they were covered in harmful fluids and dirt, risking infection and hypothermia फॉर द बेबी। उनका ये मानना है कि हम रोज रोज अगर नहलाएंगे बच्चे को तो ये उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही सही नहीं होता है। दूसरा इशू ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत डिले करते हैं। उनका कहना है कि
जो मदर को जो सबसे पहले प्राइमरी जो ब्रेस्ट मिल्क आता है वो जो है वह बहुत थिक होता है, स्टिकी होता है और पेल होता है, येलो होता है। और ये जो है वो ये वेस्ट मिल्क होता है और इसको बच्चे जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं और इसलिए वो न्यूबॉर्न बेबी को थोड़े डिले होने के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। ट्राइबल वुमेन डू नॉट ब्रेस्ट फीड, इंस्टेड दे प्रोवाइड प्री लैक्टल फीड्स such as honey, sugar water mixed with traditional herbs, animal milk. Breastfeeding is further complicated by the high rate of anemia in mothers, with 65% of our tribal women and age 15 to 49 having anemia resulting insufficient breastfeeding milk production. इनका सर्टिफिकेट दोनों ही कारण है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते क्योंकि देंगे, उनका हार्ड कॉपी ट्रेडिशन वैसा है और दूसरा ये है कि महिलाएं जो है वो एनीमिक होने के कारण ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती है। तो दोनों ही स्थिति में बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से बच्चों का जो केयर है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशनल डाइट एंड हेल्थ केयर सर्विसेज अनदर हेल्थ प्रॉब्लम अमंग द ये गरीबी और रिसोर्स के स्कैरिसिटी के कारण बहुत सारे बच्चे जो है वो माल न्यूट्रिशन है। एक स्टडी है कि मारिया और गोल्ड चिल्ड्रन जो है वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित होते हैं क्योंकि लगभग 4.5 मारिया एवं गोल्ड चिल्ड्रन जिनका की एज 6 to 23 हाँ मंथ्स वही है वही वही उनको एडिक्वेट डाइट नहीं मिल तो पाती जब है हम करेंगे तो और बहुत सारे बच्चे हैं जितने इसीलिए पार्टिसिपेंट हैं उनको अंडरवेट होते हार्ड हैं। कॉपी देंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का सॉफ्ट डेटा कॉपी यह कहता है कि उसको 35.4% चिल्ड्रन बीइंग अंडरवेट। ओनली 37 ट्राइबल वुमेन रिपोर्टेड रिसीविंग एनी पीएनसी in 48-hour deliveries. There are so many cultural पीडीएफ practices during सब एक menstruation साथ increasing the risk of एक infection. साथ ट्राइबल गर्ल्स के उसका लिए ऑप्शन डाउन वुमेन्स के होता लिए है। आइसोलेटेड एक घर बनाया जाता है जिसको एक कुरुम और घर चीज कहा करेंगे जाता अगर है। देखते हैं ड्यूरिंग तो हमें menstruation which are नहीं camped एक जो can be जो dangerous सर्टिफिकेट रहेगा ना especially in the उसमें rainy season क्यूआर due to रहेगा, वो threats of क्यूआर है ना snake bites. Many इसको women स्कैन despite करके disliking this पोर्टल में tradition are compelled for them follow them, स्पेस affecting their reproductive health and increasing their स्पेस नहीं लगा तो vulnerability मुश्किल to से वो 10 infection. कल्चरल बैरियर्स तो है ही है, फोटो फैमिली डिजिटल प्लानिंग, एबॉर्शन, रिस्ट्रिक्शन करेक्ट एंड एक्सेस टू केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी अनेक दूसरे प्रॉब्लम है जो उसको है महिलाओं को आजकल वैलिड देते हैं। हाउ टू वेरीफाई योर चूंकि सर्टिफिकेट तो आजकल संस्थाओं में उनका मिलती है जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नियोनेटल केयर हर की और सर्टिफिकेट होम बेस्ड नियोनेटल केयर प्रैक्टिसेस जो क्यूआर होती है वह बहुत प्रॉपर उसमें बहुत सारे डिजिटल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शन होते हैं और इसीलिए ट्राइबल महिलाएं अपने प्रेगनेंसी, मेरे अपने कॉलेज डिलीवरी और अपने बहुत सारे चीज़ों में प्रॉपर उनको हेल्थ केयर नहीं मिल पाता है और बहुत सारे इसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस उनके डिलीवरी पीरियड में होते हैं। यानी कि इस इसके साथ ही साथ ट्राइबल 2000 फैमिलीज हैज जैसे restrictions for अपार abortion as it is a अपार sin आईडी for के them, आने के बाद so they इसकी do कम not मार्क्स adopt होती है family planning. अर्ली प्रेगनेंसी भी एक बहुत बड़ी बात है कि वही बहुत ही बस 15 अपार आईडी साल डाल की उम्र में ही प्लस उनके ट्राइबल मार्कशीट जो है वो बच्चे वेरिफिकेशन महिलाओं को बच्चे हो जाती हैं। मैरिज के एज उनकी नॉट फिक्स नहीं होती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी जो होती है वो 20 के एज में आ जाती है। गवर्नमेंट के बहुत सारे माने जो होता है प्रोग्राम चलाए जाते हैं, टाइम टेबल जननी और ये सुरक्षा योजना और इनमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट योजना, लेकिन बहुत सारे जो ट्राइबल महिलाएं हैं वो इन फैसिलिटी का लाभ नहीं ले पाती हैं। एक तो ये है कि मुझे जो हाई जो वो जो पिछले वाला मतलब सही प्रेग्नेंट हमें वुमन निकल होती है वह हॉस्पिटल में जाने से ही थोड़ा सा कतराती है ट्राइबल वुमेन। और अगर हेल्थ केयर सर्विसेज होते भी हैं तो उनको लगभग 40 किलोमीटर तक कई बार उनको जाना पड़ता है। हॉस्पिटल फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल नियर बाय टू देम, इसलिए डे टू डे जो टेस्ट है या डे बाय डे जो टॉपिक टेस्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। दूसरी, एंटीनेंटल इनएडेक्वेट केयर विजिट्स आर एसेंशियल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स सेफ्टी, डायग्नोसिंग हाई रिस्क कंडीशंस फॉर प्री severe anemia. Tribal women आरएसएम वाला underutilize these services और इसीलिए बहुत सारा जो मैटरनल प्रॉब्लम है उनको आता है। मेनी ट्राइबल विलेजेस आल्सो लेक गवर्नमेंट सपोर्टेड रूरल चाइल्ड केयर सेंटर. ट्राइबल वुमेन आर forced to walk at least 4 to 5 kilometers to access minimally nutritious meal to rice, lentil, vegetable, eggs, etc. हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बिहेवियर एक और उनका एटीट्यूड, यह भी ट्राइबल 10th वुमेन्स पेपर को हम हेल्थ वही देंगे केयर को यूटिलाइज करने में एक बहुत बड़ी बाधा है। ये कुछ ट्राइबल हेल्थ केयर के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। इनका गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे संस्थागत
इंस्ट्रक्शन लिख रहे थे कि मिटिगेशन किए गए हैं, लेकिन फिर भी गरीबी जो है एक बहुत बड़ा कारण है। ट्राइबल गरीबी के कारण इनसफिशिएंट नरिशमेंट ओके, थैंक यू बच्चों को भी फॉर होता है प्रेजेंटेशन। और महिलाओं को भी होता है, और मैं और बस इसीलिए बहुत कुछ ही सारी मैंने 65% महिलाएं थैंक जो यू है मैम फॉर योर एनीमिक है, प्रेजेंटेशन। और नाउ लेट्स 65% बच्चों मूव को ऑन। भी माल नरिशमेंट है। उसके बाद हाँ, एडोलेसेंस एज में भी उनको प्रॉपर Okay, ma'am. ट्रेनिंग नहीं Thank दी you. जाती है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो किए किसी ने जा बोला ओके सकते हैं। इस थैंक यू मैम। संदर्भ में हमने केस जस्ट स्टडी गो भी शेयर की मूव थी कर दीजिए। पेंड्रा तहसील के, और हमने पाया था कि मैंने हम लोगों ने लगभग 10 विलेजेस की ये स्टडी की थी। 10 विलेजेस की स्टडी में हमने डाइटरी इंटेक में पाया था कि न्यूट्रिशनल मैंने या बीएमआई इंडेक्स अगर अपन देखेंगे तो लगभग सीवियर जो 13.0% जो महिलाएं हैं वो न्यूट्रिशन बने माल न्यूट्रिश थी, 18.4 मॉडरेटली, और 12.2 जो है वो माइल्ड मतलब न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम से थी। जबकि कुछ महिलाएं जो इनमें इनमें अगर हम देखेंगे तो हेल्थ केयर हेल्थ सर्विसेज की इसमें Thank था you, कि ma'am. बहुत कम Please लोगों conclude. ने ये किया था। निश्चित रूप से इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल हीलर्स, सर बोल रहे हैं अवेयरनेस ऑफ थैंक यू मैम। एजुकेशन, प्लीज अंडरस्टैंडिंग द कंक्लूड। प्रॉब्लम्स, दीज आर ये सम बहुत ज्यादा हो मिटिगेशंस गया वी ना, औरों कैन को तो समय टू देना इम्प्रूव जरूरी देयर हेल्थ सर्विसेज। है। थैंक यू वेरी मच। ये ठीक है। थैंक यू थैंक यू मैडम, तक थैंक यू मुझे सो मच। आएगी। हमारे चेयरपर्सन और को चेयरपर्सन से मेरा निवेदन है कि यदि आप इस रिसर्च पेपर से Yes. संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। Okay, ma'am. I have some basic and general question like that. Is your paper is in general tribal healthcare system or it's specific for a certain area or certain district? सर एक्चुअली इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये जनरल हेल्थ केयर सिस्टम पे था, लेकिन सेकंड पार्ट में हमने उसी को एक पेंड्रा तहसील के ऊपर काम करके विलेजेस पर काम करके उसको थोड़ा सा फाइंड आउट करने का So प्रयास किया। that means ma'am, ये जो कुरुम घर के बारे में आप बोले, जी, this is specific for this tribal. यस सर। Okay. Okay. And the second question is that when you survey the क्लियर आ जाता है व्हाट specific आर यू tribal, डूइंग। is there any kind of sampling method you just follow? यस नो सर, आई एम जस्ट गोइंग टू विलेजेस, और बोल दीजिए हमने केवल आप प्रेसिडेंसी ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूट में कुछ वुमेन इंटरेस्टिंग का लगा सर्वे हो किया सकता था। है कर। मेरा क्वेश्चन है कि और आप ट्राइबल जब 100%, सर्वे कर रहे थे 100% नहीं, तो 100%, 100%, 100% 100% पॉपुलेशन को वुमेन ही का, आप या सर्वे किए? जी जी 100% घूमता वुमेन का घूमता हमने किया था। फिजिक्स उनका हाइट और वेट, व्हाट इज हाइट योर एंड वेट प्रोफाइल लिया और बीएमआई आई एम इंडेक्स दैट। ज्ञात किया। Okay. Thank you. जी सर, थैंक यू मैडम। अगले शोध पत्र की प्रस्तुति के लिए मैं सोनल कुमारी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। सोनल कुमारी, रिसर्च स्कॉलर, यूनिवर्सिटी पीजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, मेधीपुरा, बिहार से। सोनल और कुमारी। भाई स्क्रीन शेयर कीजिए। नमस्ते सभी को, मेरा नाम सोनल कुमारी है और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, इनके बेबी भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा, बिहार से। मेरा जो टॉपिक है वुमेन सोशल फ्रीडम एंड एनालिटिकल अप्रोच। क्या है Women's social freedom remains a pivotal आपने indicator of global societal progress, equitable development, and human rights. This paper presents an analytical investigation into the multidimensional framework of female autonomy, बोले examining how structure, culture, and institutional forces shape or constrain women's agency within both public and private spheres. Utilizing a mixed analytical paradigm, the study evaluates core socioeconomic parameters such as educational accessibility, financial independence, and legal protection, alongside implicit social cultural norms or and patriarchal construct that systematically influence freedom of movement, decision making, and self-expression. The findings highlights that while प्रगति formal कॉलेज का मैं देखूं एडवर्टाइजमेंट legislative reform have पुराना extended कॉलेज normative rights, sustainable freedom continues to be mediated by deep-seated gender hierarchies, regional disparities, and interesting demographic variables. इंडक्शन Furthermore, तो the सर analysis आज है illustrates था the
critical role of modern digital space as both an empowering arena for collective voice and a emerging site of technological surveillance. Ultimately, the paper underscored that true social freedom extends beyond mere legal recognition, requiring structural socio-cultural transformation and sustained targeted policy interventions by specializing theoretical perspective with empirical metrics. This study offers a concise framework for sociologists, policymakers, and advocates aiming to accelerate socio-economic gender parity. मेरा जो कहना है इससे यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि महिलाओं की वास्तविक सामाजिक आजादी के लिए केवल कानूनी सुधार पर्याप्त नहीं है बल्कि पितृसत्तात्मक बाधाओं को तोड़ना भी अनिवार्य है तभी शिक्षा आर्थिक स्वतंत्रता और डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से एक समावेशी व समान समाज का निर्माण संभव हो सकेगा थैंक यू थैंक यू मैडम जी Ma'am, सर yes. Can you please explain the objectives of your studies? Sonal, ma'am, just यस can you please explain the at least 4 objectives of your studies? एक सेकंड सर women's autonomy social freedom gender parity particle construction socio-economic empowerment agency legal reforms. No, these are not objectives. These are not objectives. You need to focus on the objectives. Okay. Oh, objectives, sorry, sir. Okay. कॉलेज Okay. तो Thank you. इसी टाइप का Thank you. ज्यादा इतना ही बड़ा होगा Before going to the next participant, I'm just like try to say some word that today we are surrounding by the AI, and the AI is the AI is a daily work-life culture in nowadays. But intensive use of AI is a very dangerous thing, and it's not bad to use AI, but you have to find out the way how the AI can help you, and you can't cut copy paste the AI things and you just present all the things. But for that it's my request to every participant that please don't do that such kind of thing. It will not improve your ability also. Okay. And also I am requesting everyone just when you are presenting, you just introduce the topic objective. If there is some hypothesis, you just tell the hypothesis and then go to the findings. Okay, continue, ma'am. आपने जो बोला Ma'am, please. ऑब्जेक्टिव ओके सर थैंक यू सो मच सर हाइपोथेसिस अगले प्रश्न की प्रस्तुति के लिए डॉक्टर ज्योति यादव मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर ज्योति यादव असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट ईवीपीजी कॉलेज कोरबा छत्तीसगढ़ डॉक्टर ज्योति यादव सेम सर जो जगदीश अनुमान था अगले शोध पत्र के लिए अमन गौर को आमंत्रित करना चाहूंगी अमन गौर रिसर्च स्कॉलर इंग्लिश मान सरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल अमन गौर अमन गौर सर आप सुन पा रहे हैं हमको Hello. Yes, ma'am. I am a little bit out of network. After some time, I will give my presentation. ओके जी अगले मैम. शोध पत्र के लिए अगले शोध पत्र के लिए डॉक्टर यति नंदिनी पटेल मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी में गवर्नमेंट शबरी नवीन गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर यति नंदिनी पटेल अगले शोध के लिए डॉक्टर दीप्ति मोदिया मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बॉटनी में
गवर्नमेंट मास्टर रवि पीजी कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर दीपिका महोबिया मैडम। शायद मैडम से नहीं जुड़ी हैं अभी। अगले श्रोता की प्रस्तुति के लिए डॉक्टर ईशा बेला लकड़ा मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में, गवर्नमेंट माता श्री नवीन कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर ईशा बेला लकड़ा। अच्छे लेवल की अगले श्रोता के लिए ऐश्वर्या सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगी। ऐश्वर्या सिंह रिसर्च स्कॉलर। Yes, ma'am. I'm sharing my screen, ma'am. Just give me a minute. I'm sharing the screen. Okay. Okay. I'm just sharing the screen. I'm just sharing the screen, ma'am. I'm sharing the screen. So, good afternoon to all the respected dignitaries, research scholars, participants. My name is Aishwarya Singh. I'm research scholar from Gadwal University, Uttarakhand. The title of my research paper is Reassessing the Tribal Leadership in India, Cultural Memory, Resistance, and the Legacy of Birsa Munda. So we know that the title of the conference is about the tribal development. In that, I have taken the strong tribal leader whose name is Birsa Munda. So my research paper basically talks about the tribal leadership through the lens of Birsa Munda. So in the introduction, I would like to discuss about Birsa Munda, how Birsa Munda stands out as a great, compelling figure. His life, his movement emerging in the late 19th century, reflecting not only the resistance against the British colonial rule, but also a powerful assertion of cultural identity and collective dignity. So this paper attempts to examine the role of tribal leadership through the lens of Birsa Munda's legacy. It explores how his movement shaped the historical consciousness and how it continues to resonate in the contemporary debates and why it is remains relevant in the global context marked by the rapid change. So study basically engages the representation of the tribal communities in literature and media, and it also reflects on the urgent need to preserve the tribal languages and the cultural practices. If I talk about the objective of study in my research paper, it is to analyze the role of tribal leadership in shaping the India's socio-political history, to examine the life, movement, and legacy of Birsa Munda, and to explore the relevance of his ideas in contemporary India, and to investigate the representation of tribal communities in literature, art, and media. The theoretical framework, if I talk about in my research paper, so it is basically connected with three theoretical perspectives. One is the subaltern studies, post-colonial theory, and the cultural studies. So subaltern studies framework, it provides an important starting point to the paper by depicting the Birsa Munda's movement, इंट्रोडक्शन है which एक्चुअली can be understood as more 7 than a बजे form जब of तक स्टूडेंट आए resistance. तब तक It basically depicts his identity and their reclaiming space within the history. The post-colonial theory adds other dimension to this discussion, in which the scholars like Gayatri Chakravarti Spivak have raised the critical questions about the representation, especially the well-known हम ये भी concern बोल सकते हैं जैसे एग्जाम of whether the subaltern can truly speak within the dominant structures. So this insight is particularly useful in this context. The cultural studies also extend this framework. It shifts the attention to culture as an active site where meaning is constantly produced and negotiated. So bringing all these three perspectives, they together allows for a grounded and nuanced reading. The research methodology I would like to talk about. So this study basically adopts a qualitative interrupted research designed to examine the role of tribal leadership in shaping the cultural and historical understanding. So rather than just relying on one single method, it brings together the insights from the cultural studies and the related disciplines.
I would also like to discuss about the representation of the Birsa Munda in literature and media. Uh, So basically, in a post-colonial lens, help us to question how these histories are represented, drawing the attention to the ways in which the Socializing external as narratives often shape or limit the indigenous voices. So the representations of the tribal communities remains uneven and sometimes problematic, and they are often represented in a very simplified ways. So, Birsa Munda has been depicted as a historical figure in the literature, art, and media. Yet his portrayals are shaped by the external viewpoints, and they do not always reflect the community perspectives. And such ये portrayals, बीजेसी such वेट कर external लीजिएगा portrayals, they often widen the gap between the representation and the lived reality. So there's a need for this globalization and the cultural preservation of the tribal culture. So globalization also comes with the mixed outcomes if we see. So preservation is very important of these tribal cultures, but it cannot be just limited to a documentation alone. The community involvement is necessary in it. Education यानी कि plays a कब significant तक role in वेबसाइट it, होगा and at the same time, culture should not be frozen in time. So it needs the space to adapt and grow with the changing conditions. There need to be the हो गया awareness सर and the एग्जाम public engagement. So the हो गया greater एग्जाम awareness is very necessary to ये address this लास्ट imbalance. So it can encourage a more inclusive reading of the past, present. So media, academic network, public discussions, so they can help in this direction. So together they can reduce this gap and can create a more balanced representation. So tribal histories, they have always received this limited space in the mainstream perspective if we see. So building awareness does not only about just adding the information, it is also about creating the space for these perspectives, for these tribals perspective to understand in a more meaningful way. Now, there are some challenges and opportunities also if we see these tribal communities face. So there are a lot of challenges like both social and cultural. So language loss is one of the most visible concerns if we see, especially as younger generations, they move away from their mother tongues. And along with this, economic struggle is there, limited access to the resources that continue to shape the everyday life. Cultural practices too are not so stable as they once were. Many traditions are slowly weakening under these changing conditions. So this creates a kind of imbalance within the communities. So this situation is not entirely negative. So digital platforms can help to preserve these stories, these tribal cultures, the local knowledge in a new ways. Policy efforts, academic work, it can also bring attention to these issues. In the conclusion of my research paper, it basically depicts the study shows that how the tribal leadership have played a significant role and yet often under recognized role in shaping India's historical and cultural landscape. So the example of Birsa Munda makes it clear that leadership was not just limited to the resistance, but it was closely tied to the questions of identity, community, and belief. The Ulugun in this emerges as a more than a historical event, making a moment of transformation with continuing relevance. So together, taken together, these reflections basically underline the need for a more inclusive way of engaging within the history, one that not only acknowledges the indigenous contributions but also allow these perspectives to shape how the present past are understood. So such an approach moves beyond the simple recognition and opens up the possibility of a more balanced and responsible engagement with India's cultural and historical entities. So when we are talking about these tribal histories, we are not just talking about, we are not just going to the past. It helps us to rethink that how these ideas of knowledge, voice, identity, it can shape in today's context. So thank you so much, ma'am, and thank you, sir, for giving me the opportunity to present the paper. So this was my paper. Thank you. Madam, one question. What is your data collection? There are no any data and percentage. So how you can complete in your research paper? So basically, I have talked about the theoretical framework and the research methodology in my work. I have not taken the datas
I have not discussed about it. I have It's basically time talked for. about the objectives of study in my paper, Okay. sir. Okay, it's kind Yes, of sir. qualitative analysis, qualitative research method you apply for this research, Yes, right? sir. It's kind of qualitative analysis you apply for this research, not quantitative analysis, right? Yes, sir. तो Yes, sir. Okay, I have a कम से कम question 2 दिन कभी Yes, that sir. till now we are in a 21st century and we are moving ahead and India is उसको already in the ड्यूरेशन moon and different एक kinds of वीक things. में But the आज इससे पहला डे fact is that तो एक till now the tribal people who are living in a remote place, living in a separate वही मैं सोच ethnic रहा हूँ environment, 7 दिन में is my एक वीक audio? हर दिन Is I am audible? डेढ़ Na? 12 से 7 दिन Yes, sir. वही It is Yes, Am I sir. audible audible. Yes, yes, properly? yes. यानी Yes, एक sir. क्लास एक Okay, क्लास है उसमें कहीं still now, दो the क्लास most of the करके tribal they करेंगे are living in a remote place. They are separate from the another modern society. Their ethic, they follow the ethic culture. Yes, sir. So, can you suggest some techniques, strategy that can have the tribal population, the tribal peoples, they are interconnected with the other part of the Indian population? So, as I told in my research paper also that digital platforms they can play a very significant role in preserving the cultural tribal histories, and sir, and we need to globally conserve the tribal culture, the traditions. Yes, sir. So, sir, कि by उन्होंने these क्या things, किया we can conserve the tribal culture. No, Yes, sir. that's अच्छा another part. You can क्या है conserve the ये tribal culture, tribal Yes, sir. ethics, tribal different kinds of phenomena. My Yes, question sir. is that Yes, sir. specifically, how can you just connect the tribal people with the modern society? तो Is there any kind of strategy you have? Sir, as I told in the paper also that these people are deprived of the resources, so we need to provide them the good resources. Like they suffer from the economic problems also. So we need to provide them a good platform or good resources so that their tradition or their culture is not just to we are not just talking about the documentation of it. At grassroots level also we need to take significant steps in this direction, sir. Who will take that? Sir, we as a youngster or we as a research scholar or So, we as a citizen of India. So okay, thank you. thank you so much, sir. Thank you everyone. ओके Thank you, Dr. Samantha, sir. Thank you, Aishwarya, ma'am. नेक्स्ट हम अगले शोधपत्र की प्रस्तुति के लिए डॉक्टर आरती कामेडिया मैडम को आमंत्रित करना चाहेंगे। डॉक्टर आरती कामेडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, कॉमर्स का बीरूलाल सब्जेक्ट पाटीदार गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, इंदौर। अच्छा डॉक्टर पुलिस आरती कामेडिया। डिपार्टमेंट अगले शोधपत्र की प्रस्तुति के लिए डॉक्टर सुशीला इक्का मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट मैडम उनका बिलासा हो गया, गर्ल्स पीजी ज्वाइनिंग है, कॉलेज हो गया बिलासपुर। सर। ओके। अगले शोधपत्र के लिए देवाशीष दास महापात्रा सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। रिसर्च स्कॉलर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट RKDF यूनिवर्सिटी रांची से हमारे साथ जुड़े हैं देवाशीष दास महापात्रा। जैसे वो आपने बताया था कि वो ऑप्शन क्लिक करेंगे तो पेज में ये होना चाहिए। अगले शोधपत्र की प्रस्तुति के लिए क्रिस्टीन अनुपा तिर्की मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी। क्रिस्टीन अनुपा तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। क्रिस्टीन अनुपा तिर्की। और आज के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के
बिल्कुल कह सकते हैं। अंतिम अनुरोध पत्र के वाचन के लिए आनंद कुमार जी को आमंत्रित करना चाहिए। आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट माता शबरी नवीन गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आनंद कुमार। आनंद कुमार। वो शायद नहीं है सर। मैडम 126 कोई एक बताने वाले थे, वो अगर है क्या, एक बार बात कर लीजिए। जी Yes, sir. अमन Yes, गौर sir. जी, जी जी मैम। रिसर्च स्कॉलर इंग्लिश, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल से। अमन गौर। जी मैम। Yes, yes, जी ma'am. सर। I am sharing. अमन गौर जी सुन पा रहे हैं हमें? चाहिए, अच्छे बने कि चाहिए। हाँ, नहीं हर हर चीज तो हर Hello, व्यक्ति के पास। ma'am. My screen is visible to all. हाँ हाँ सर। जी सर। Okay. जी ma'am. Good afternoon, everyone. Thank you so much for this wonderful welcome. I would like to extend my heartful grateful to Dr. Jagdish Sharma, Samantha sir, and Hardeep Singh sir, and Shelly Oja ma'am for this organizing this wonderful event. And my topic is India has a great team, and my topic is Viksit Bharat and Tribal Development 2047. Uh, India has a great dream. We want to become a fully developed nation, a Viksit Bharat, by nearly 2047. But I want to ask ये a नहीं simple देते, नहीं तो question: वो देते। can we become a truly development nation? नहीं देते। Sorry, ma'am, my health is down. That's why. But I want to I want to ask a simple question: can we become a truly developed nation in if our tribal community are left behind? The answer is no. Our tribal population and peoples are the root of our country. For thousands of years, they have lived in the forest and protected our nature. सेकुलर Today, the महाविद्यालय whole के world ये is में आता है worrying कि about the यूट्यूब वेबसाइट climate में change and saving the earth. ये We ईमेल can हुई। learn a lot from this and from tribal communities because they know how to live in a peace and with the nature. Developing with our tribals areas does not mean just building big cities for them. Real development means helping them move forward in life while protecting their beautiful culture, their identity, and their nature source. We must hold their hands and walk together. But the road to development is not easy. There are many challenges we must understood and today इसको ना poverty and lack तोड़ना of नहीं चाहिए, इसको education. This is फोल्डर the सब main फोल्डर में कन्वर्ट करना thing चाहिए। that they फाइल have आते जाएंगे no उसको हटाओ। knowledge. And after that, this is the biggest problem. Many tribal families live in a poverty. Even today, many remote villages do not have a good school or a proper education. So the government should take actions for this and that do ये not देखो दिमाग have ये any enough एक जगह बैठो ना, hospital ये or इसमें good बैठो, doctors मुझे मैडम nearby. बोलिए इसका कि मेरा Infrastructure defect. Many villages still need better roads, clean water, and continuous electricity and unemployment. Many tribal peoples lose their land and forest because of this. They loses their jobs and faces high unemployment and also they sometimes face social discrimination in the outside world. We must solve these problems first. Opportunity and objective. What are the opportunity? Where there are challenges, there are also a great opportunity. If we work in the right direction, we have three main objectives to help them. The first objective is to, ma'am, my screen is visible or not? Hello?
स्क्रीन नहीं दिख रही। Hello, are you all audible to me? Not so, sir. You Not are so. audible but not visible. Not open your presentation. Okay, No, okay. sir. No, Ma'am, my slide is not sir. working or not? Yes, ma'am. First of all, I will like to share my screen. हाँ सर, हम आपको Mm, सुन पा रहे हैं सर. but my slide is not showing, ma'am. अरे मोबाइल दिख रहा है भाई, उसको पावर पॉइंट को ऑन कर लो, दिखेगा। Yes, sir. So the first objective is to educate, education and skill development. We need to provide them with a high quality education. We must provide train to tribal youth and new skills so that can get a good job. Second objective, sustainable livelihood. We must make them financially strong. We need to support them in farming using natural forest resources and start small businessing. The government offers many support schemes and we must help them use these schemes. The third objective is digital inclusion and culture heritage. In today's digital world, we must connect a tribal youth to computers and the internet, but at the same time, we must promote tourism and protect their rich heritage culture. Their arts, their dance, their traditional medicines must be saved and respected. Expect outcome. What are the expected outcomes of this? If we achieve this objective, what will be the final outcome? The first outcome will be inclusive growth and community participation. Every ma- tribal man and woman will become an active part of Indian progress. They will earn better improvement in their family lives. The second outcomes will be environmental conservation because tribes naturally protect the forest. Empowering them means we are protecting our own environment for a better tomorrow. The final outcome will be a better quality of life. We will see healthy tribes, strong villages, and clean energy powering their homes. Our final goal is simple, inclusive and executable, and sustainable development of our tribal community for a better tomorrow. And now I want to conclude my words by saying this. In conclusion, I want to say that the tribal development is not a favor we are doing for them. It is a basic right. The Viksit Bharat is a house that belongs to everyone. The foundation of this house must should be strong. When our tribal farmers, tribal women, and tribal students are educated, healthy, and happy, only then our India truly become a developed nation. I strongly believe that the idea and the research shared in this conference will now open new doors for the bright future of our tribal community. Thank you very much for listening to me so patiently. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, ma'am. Thank you, Aman Gaurji. डॉक्टर जगदीश सामंत सर और डॉक्टर हरप्रीत सिंह सर से मैं निवेदन करूंगी कि सर यदि आप से कोई प्रश्न करना चाहते हो तो कर सकते जी मैम, am I audible? Yes, sir, you are Yes, sir. Yes. absolutely audible. Or has presented his paper on tribal development and Viksit Bharat 2047. Aman, I have two observations in your paper. First one is Yes, that you have taken a very broad view. I mean, it's a Viksit Bharat 2047 encompass so many things. So yes, I sir. think you should keep it very precise, right? And tribal Yes, development is also a bigger area. I mean, you can talk anything about the development of the yes, sir. tribals. So you should be very specific and particular about the tribes which you are going to address. These should be there in your research paper when you are going to present. And Yeah. rest about all the
earlier presenters, Dr. Sushila Ikka ma'am, she has given presentation again very on a broad way. She has taken 100% of the total tribal people whatsoever. She has been covered up in that, and she talked about the health issues. That was a nice presentation. Sonal Kumari has given a view about women's social freedom and analytical view. She's also supposed to improve herself as far as research and its methodology is concerned. So Aishwarya Singh has comparatively given a very good presentation. In that case, what I feel, the tribal leadership which was led by the legacy of Birsa Munda is really a good work which should be projected to the other audience as well, to how she has done. So with these words, I'll take a leave with the permission of today's chair, Dr. Jagdish Samanta sir, and Dr. Narendra Guriaji. I would extend my heartful thanks to the whole organizing committee, Chaitanya Science Art College, that they have given me this opportunity to be a co-chairperson of this session. Since one more program is going on in our department and I'm supposed to be there at the stage, that's why I'm so sorry I'm leaving this at this moment. Otherwise, I would have listened to or more other participants as well. Thank you very much. Thanks for calling me Thank and you, Sensei. make Okay. me rich as far as the knowledge about the tribes. Thank you very much. Hello. Thank you, Sir, sir. Thank you, someone has Sensei. left me. जो प्रेजेंटेशन डॉक्टर सैली मैम अगर Hello. कोई छूटे Excuse होंगे me, sir. प्रेजेंटेशन रेफरेंस नंबर 121 शायद कमेंट बॉक्स में कुछ टेक्स्ट किए हैं, तो जो भी छूटे Excuse हैं me, ना sir. उनको भी इनवाइट कर लीजिएगा. अभी इसी टेक्निकल सेशन में प्रेजेंटेशन करा लीजिए. Excuse me, sir. Sir, you are asking question, but someone left out me. Jagadish Samant. Hello. Sir, someone अभी has left out me when you are questioning question to me. क्वेश्चन किए नहीं है, वो अपना इंसाइट्स दिए ओझा चले मैडम गए. 121 रेफरेंस नंबर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं. सर मैं प्रेजेंट हूँ सर, डॉक्टर प्रभा भिरोरिया. ओके ओके प्रेजेंट कीजिए मैडम. Ma'am, सर मैं अपनी ma'am, स्क्रीन 1 minute. शेयर करना चाहूंगी. Ma'am, 1 minute. Ma'am, अरे अमन भाई हो गया आपका प्रेजेंटेशन. ओके वो तो सुन ही नहीं रहे, अपने बात कह रहे. अरे भाई, उन्होंने अपनी बात बोल दी है कि आप डॉक्टर यू आर प्रभा मैम, टेकिंग द ब्रॉड एरिया ऑफ, जी मैं असिस्टेंट अपनी स्क्रीन प्रोफेसर यू शेयर हिस्ट्री, टेक करती हूँ सम मैडम. पीएमसीओ गवर्नमेंट. स्पेसिफिक जी जी मैडम. फील्ड मैडम और मैं अपनी एरिया, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैडम. देन पुट. ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना जी चाहिए. जी. मैं भी सुन रहा था. मैडम योर रेफरेंस नंबर प्लीज शेयर टू आवर मॉडरेटर मैडम. मैडम मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? मैम आपका रेफरेंस नंबर नहीं हमारे मैडम. औजा मैडम को बोल देंगे क्या आपका 121. रेफरेंस नंबर. मैडम मेरी 121. स्क्रीन शो हो ओके रही मैडम. है? मैडम स्क्रीन शो हो रही है? नहीं मैडम, नहीं 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 मैडम, शो नहीं हो रही है. यहाँ से तो मेरे को दिख रहा है कि शो हो रही है. फिर से जाऊं, बैक करूं? अब आई मैडम? हेलो. नो नो. मैम. तो फिर मैडम बिना स्क्रीन शेयर ही कर दूं प्रेजेंट मैडम? मैं डॉक्टर प्रभा भिरोरिया, सहायक प्राध्यापक, यस मैम प्लीज. पीएमसीओई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना. मैं जिस विषय पे प्रस्तुति दे रही हूँ वो है मध्य प्रदेश की विलुप्त प्राय सहरिया जनजाति को क्लासेस विशेष स्टार्ट कीजिए. संरक्षण के संदर्भ में मेरे जो आज के प्रमुख बिंदु रहेंगे वो है भारत जनजाति इसको विविधता आप वाला सभी देश डिपार्टमेंट है. को कीजिए ना मध्य फॉरवर्ड. प्रदेश में जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक संख्या वाला राज्य है और यहाँ पर जनजाति में जो शहरी जनजाति है वो विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में गिनी जाती है और इनके संरक्षण एवं विकास की यहाँ पे बहुत अधिक आवश्यकता है. अब चूंकि मैडम मेरी यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही तो मैं बता दे रही हूँ कि मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी हिस्सा है
उसमें यहाँ पर हमें कुछ जो प्रमुख जिले हैं वहाँ पर हमें ये शहरी जनजाति देखने को मिलती है प्रमुखतः श्योपुर जिला, शिवपुरी जिला, गुना जिला, अशोकनगर जिला, ग्वालियर जिला, दतिया, मुरैना और विदिशा। तो मुख्यतः ये ग्वालियर चंबल संभाग के अंतर्गत ये सभी जिले आते हैं और यहाँ पे मूलतः ये निवास करती है। लेकिन कुछ जनजातियां यहाँ से मतलब शहरी जनजातियां कुछ जगहों पे माइग्रेट भी कर गई हैं और इनकी जो उत्पत्ति है और उनका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके विषय में बताऊंगी कि शहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है और ये फारसी भाषा का एक शब्द इसके है। बिहार पे इसमें फिर वो अरबी बोलेंगे भाषा में भी इसके विषय में जानकारी हर मिलती मंथ है। हर तो मंथ वहां पर इसको तब शहर मतलब रेगिस्तान भी होता है और कुछ जंगली क्षेत्र भी कहा जाता है। तो शहरिया जनजाति प्रमुखतः जंगली क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवास करती हैं और इनकी अगर ऐतिहासिक मान्यताएं देखें तो ये लोग अपने आप को जो अब रामायण जैसे काल की माता टाइम टेबल सबरी कैसे थी पता वो उनके वंशज होने का भी ये लोग दावा करते हैं। और ये प्राचीन वनवासी है और सहरिया इनका प्रमुख समुदाय कहलाता है और भारतीय अब संविधान ये में भी है तो मैं इन्हें नोट अनुसूचित जनजाति के रूप पर्टिकुलर में स्थान दिया गया है। इसका जो संविधान के एक अनुच्छेद एक हैं हर तीन वाइज सौ एक हर ईयर बनता है 41, 342 और 351 हर साल और आएगा 352 इनमें और प्रमुख रूप इसमें से इनको जनजाति का टर्म्स लिखे होते हैं मतलब कि अर्न इनको करना चाहिए दर्जा दिया और गया कुछ है। फिर शहरिया जनजाति की कैटेगरीज संस्कृति और गतिविधियां भी विभिन्न प्रकार की है। अगर इनका देखा जाए तो इनकी पारंपरिक जो वेशभूषा है पुरुष लोग सफेद व हल्के रंग की धोती कुर्ता और अंगोछा पहनते हैं और सिर पे भी पगड़ी बांधते हैं। इनकी महिलाएं रंग बिरंगे दुगड़ा साड़ी ये सब पहनती हैं और मुख्यतः ये लोग चांदी के आभूषण सर्कुलर एक को खत्म धारण करते करते हैं। हैं इनका परिवार तो सर्कुलर से एकल होता है लेकिन ये फिर समूह में उसके रहना बाद पसंद काउंसलर्स करते आ हैं। जाएंगे अगर कहीं जाते भी हैं तो उसके ये बाद समूह नोटिस में का ही उसके बाद जाना पसंद अटेंडेंस करते सारा हैं। इनके जो लोकगीत हैं हर महीने नृत्य नहीं हैं करना वो क्योंकि ये प्रकृति प्रेमी सर्कुलर होते हैं इस कारण कि से ऑल ये लोग ईयर इनके पे जो लोकगीत होते हैं वो प्रकृति से ही प्रेरित होते हैं। इसमें ये लोग जीवन से संबंधित प्रेम त्योहार श्रम इन से संबंधित भावनाओं को ये व्यक्त करते हैं। और जब ये सामूहिक नृत्य करते हैं तो सामूहिक नृत्य के इनके जो अवसर होते हैं इनके जो प्रमुख को किया करते हैं। इसके अलावा अगर कम हो हम देखें तो शहरिया जनजाति का जो धार्मिक पक्ष है नहीं तो इसी वाले धार्मिक पक्ष में भी अगर देखें तो ये लोग विशेष देवी इंडस्ट्री देवताओं की पूजा करते हैं। इनमें प्रमुख हैं ठाकुर बाबा आज क्या जिन्हें तारीख ये शहरिया है समाज के प्रमुख आराध्य देव भी कहते हैं और ये इनको अपना रक्षक देवता भी कहते हैं और प्रमुख रूप से इनकी पूजा भी करते हैं जो परिवार और समुदाय की रक्षा करते हैं। हेलो मेरी आवाज आ रही है ना सर? हेलो। नहीं होता है सब उठा रहे हाँ मैम कंटिन्यू कीजिए। जी जी हाँ। तो यहाँ पर ठाकुर देवता की पूजा करते हैं और इनकी पूजा करते समय ये लोग विशेष प्रकार के भोग लगाते हैं और इसमें मदिरा और मांस का भी ये लोग इनको भेंट के स्वरूप में चढ़ाते हैं। फिर इनके दूसरे प्रमुख देवता है भैरव देव जिन्हें ये ग्राम रक्षक देवता भी कहते हैं और ग्राम की सीमाओं पर ही इनकी स्थापना की जाती है। इनकी पूजा भी वे विशेष रूप से करते हैं खासतौर पे बुराइयों से बचने के लिए अच्छी बारिश होने के लिए और अच्छी फसल होने के लिए भी इनकी पूजा विशेष अवसरों पर की जाती है। इनको भी चढ़ावे में मतलब टीचिंग विशेष भोग लगाए जाते हैं। फिर इनके अन्य जो प्रमुख देवता में नाग देवता आते हैं और बीजासेन इनकी माता आती है। रजिस्टर बीजासेन रजिस्टर माता को रजिस्टर भी ये लोग शक्ति और उर्वरता की देवी मानते हैं। इनके लिए इनसे वो अन्न के लिए संतान की समृद्धि के लिए पूजाएं करते हैं और महिलाएं और पूरा समुदाय इनकी बहुत विशेष रूप से पूजा करते हैं। और जो फसल की कटाई होती है उसके पश्चात भी ये लोग इनकी बहुत विशेष पूजा किया करते हैं। अब इनका अगर आर्थिक पक्ष देखें तो शहरी जनजाति आर्थिक रूप से तो वैसे कृषि का कार्य भी करते हैं और वनोपज का भी संग्रह करते हैं। चूंकि लेकिन अब वनोपज सीमित होते जा रहे हैं तो इनकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी है। यद्यपि ये लोग महुआ का संकलन करते हैं तेंदुपत्ता का संकलन करते हैं और जो वनों में इमली है या करौंदे हैं इनका भी संग्रह करते हैं और विशेष रूप से ये लोग शहद का भी संग्रह करते हैं। अब हम देखते हैं कि शहरी जनजाति की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। तो अगर हम देखें और तो ये तो इनकी एनएसएस गरीबी और आजीविका का इनका पास अभाव है क्योंकि मैंने अभी बताया अच्छा कि इनके यूनिवर्सिटी नहीं जो ये वनोपजों पर ही ज्यादा आधारित रहती है इनकी पूरे व्यवसाय। तो अब वन थोड़े 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 मतलब इनमें कमी आ रही है तो वनों की जगह अब औद्योगिकरण होने लगा है तो इनके संसाधन भी सीमित होने लगे तो इनकी गरीबी का और आजीविका का इनके पास ये एक अभाव सा रहता है।
इनके पास स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव रहता है, क्योंकि ये लोग कुपोषित होते हैं, अच्छे भोजन, पौष्टिक भोजन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण ये है कि इनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है और कम शिक्षा होने के कारण ये अपने अच्छे स्तर के विषय में भी नहीं सोच पाते। फिर अगला पॉइंट है सामाजिक भेदभाव और शोषण। ये लोग मुख्य धारा मतलब समाज से ये लोग थोड़ा सा दूर हटकर रहना पसंद करते हैं। ये ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर जाना पसंद नहीं करते हैं और अपने खुद के ही समुदाय में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो एक तरह से ये अपने आप को अलग थलग रखते हैं। तो इनके पास जब अच्छे कौशल नहीं है, अच्छे प्रशिक्षण के अभाव है, तो इनके पास रोजगार की भी हमें कमी देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो इनका जो वन अधिकार है और भूमि की समस्या, वन भूमि का इन पे अधिकार ना होने के कारण सरकार के जो विभिन्न प्रकार के वन से संबंधित नियम है, तो ये लोग वहां पर अपना पूरा अधिकार नहीं जता सकते। भूमि के अभाव के कारण उनको विस्थापन का खतरा रहता है और ये दिन प्रतिदिन पलायन ही करते रहते हैं और वन संसाधनों के अभाव के कारण ये इनका उपयोग भी नहीं कर पाते। फिर है इनके पास पेयजल और बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। स्वच्छ पेयजल की इनके पास कमी है। यहाँ तक कि जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं वो अंदरूनी जंगली क्षेत्र होते हैं या पहाड़ी क्षेत्र जो कि सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं। इनके पास बिजली की भी कमी होती है, आवास की भी सुविधाएं नहीं होती है। तो इस तरह से एक तरह से ये दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में ही निवास करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनमें जो अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, तो उनके कारण भी इनका समाज थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। इन्हीं को हमें इनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इनको दूर करने के लिए अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शहरी जनजाति के लिए काफी सारी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि शिक्षा एवं छात्रवृत्ति योजनाएं, स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाएं, आजीविका एवं रोजगार योजनाएं, आवास एवं मूलभूत सुविधा योजनाएं, कौशल प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए योजनाएं, विशेष विकास पहल से संबंधित योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनाएं और भूमि एवं वन अधिकार अधिनियम जो कि 2006 अधिनियम के अनुसार इसका क्रियान्वयन किया गया है और इसके अंतर्गत उन्हें भूमि के पट्टे भी दिए गए हैं जिससे कि ये लोग अच्छे से कृषि का कार्य कर सकें। अब मैं बताना चाहूंगी कि शहरी जनजाति के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत अथक प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से श्योपुर जिले में स्थित एक संग्रहालय की स्थापना भी की है, जिसके माध्यम से इनकी संस्कृति का संरक्षण हो सके, इनके ऊपर शोध कार्य कर सके और इनकी पारंपरिक वस्तुओं का भी संरक्षण किया जा सके। तो अब मैं लास्ट में निष्कर्ष रूप से कहना चाहूंगी कि शहरी जनजाति मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण आदिम जनजाति है और इनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार पर विशेष ध्यान आवश्यक है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण इनके लिए अनिवार्य है। इसके अलावा मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगी कि इनके लिए अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था बहुत आवश्यक है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है, वन अधिकारों के संरक्षण के माध्यम से इन्हें और भी विशेष अधिकारों की आवश्यकता है और कौशल विकास की भी आवश्यकता है और विशेष रूप से इनमें जन जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं अपनी प्रस्तुति समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हेलो। धन्यवाद डॉक्टर प्रभा विरोरिया मैम। जी थैंक यू मैडम। सो मच। जी मैडम। सेशन में जितने भी शोध पत्र प्रस्तुत हुए हैं उन्हें ओवरऑल कंक्लूड करने के लिए मैं मिस्टर आजाद वर्मा सर, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, चैतन्य साइंस एंड आर्ट्स ऑटोनोमस कॉलेज पामगढ़ को आमंत्रित करना चाहूंगी। आवाज नहीं आ रही सर। आप म्यूट है, म्यूट है सर, म्यूट, म्यूट है सर, म्यूट। वीडियो भी उधर। हेलो। टेक्निकल सेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर जगदीश सामंता सर, को चेयरपर्सन डॉक्टर हरप्रीत सिंह सर और सेशन मॉडरेटर डॉक्टर शैल्यूजा सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन 2 जो कि
जिसमें ऐश्वर्या सिंह जी ने बहुत अच्छा प्रस्तुति दिया अपना रिसर्च पेपर का। विषम के लाइट के बारे में मैंने बताया, और डॉक्टर अमन गौर ने दक्षिण भारत में ट्राइबल डेवलपमेंट का जो महत्व है उसके बारे में अच्छी प्रस्तुति दी। साथ ही साथ डॉक्टर प्रभा मैम ने अपने शैली जनजाति के बारे में बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए, अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चेयरपर्सन सर और को चेयरपर्सन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत अच्छे और सुचारू रूप से इस टेक्निकल सेशन का नेतृत्व किया। साथ ही मैं डॉक्टर शैली ओझा मैम का भी धन्यवाद, जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन इस टेक्निकल सेशन का किया। धन्यवाद। तो कल को तो ड्यूटी है। प्लीज अपना फीडबैक और सजेशन दें। जी बाकी और भी लोग प्रेजेंट किए थे, मेरे पास उनके डिटेल हो गया। हाँ, और लोग किए थे करीबन 5-4 लोग। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बीच में आए थे वो एडिट। You are asking me, na, ma'am? Jagadish, please conclude this session. Okay, Yes, sir. okay, okay, okay. Yes, sir. Right, right. Uh, the technical session 2 is a very interactive and very well scholarly session. The most of the paper presenter, they are tried their very best, and Dr. Prabha ma'am and Aishwarya, their papers are all round good. They are focusing on a specific types of paper, specific types of data, and they try to present their paper in a very good way. But the most of paper presenters, they are very in general kinds of presenting their paper. My suggestion to them that they have to focus and limited their area of expertise, area of paper presentation, and area of the surveying, all the things. And I think most of the faculty, most of the paper presenters, they are basically focused on the quantitative data analysis, and the Aishwarya, he focused on the qualitative data analysis. All over the paper presentation is good, and it's a very good platform to present this kind of data. I am giving full enthusiastic marks to the all organizer, especially Dr. Narendranath Guria, one of my friend, who just give me this opportunity to chair this session. Thank you, everyone. It's a very interactive session. Thank you very much. Over to you. आवाज तो आ रहा है। कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं थैंक यू सर। Hello. Thank you, sir. Thank you so much, sir. जगदीश sir, thank you so much. दूसरे टेक्निकल सेशन की समाप्ति की घोषणा करने से पहले मैं सर से अनुमति चाहूंगी कि दूसरे सेशन के समापन की घोषणा करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कल जो टेक्निकल सेशन और शेड्यूल जो है उसी हिसाब से शुरू होगी। सभी पार्टिसिपेंट के रिक्वेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स must will join the proper time next day 9th August at 12 p.m. Okay, thank you to all.